in Hindi and Sachin Chatte in English. ये आकाशवाणी है। अब हम आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी गोवा लिए चलते हैं, जहां से आप 53वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी हिंदी में और सचिन चट्टे अंग्रेजी में। आइए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पणजी गोवा चले। नमस्कार। पणजी गोवा में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था एनएफडीसी द्वारा आयोजित भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मैं राजश्री त्रिवेदी अपने साथी कमेंटेटर सचिन चट्टे के साथ आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। इस 9 दिवसीय फिल्मोत्सव का उद्देश्य ही दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और सिनेमा की उत्कृष्टता को सामने लाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। फिल्म संस्कृतियों को एक साथ लाना, विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार की समझ और विश्व सिनेमा की सराहना ही इस आयोजन का मकसद है। इफी 2022 की ओपनिंग फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर का प्रदर्शन अभी पूरा हो चुका है। ये विनीज समाज की संभ्रांत महिला अल्मा महलर और ऑस्ट्रियाई कलाकार ऑस्कर कोकोश्का के बीच भावुक संबंधों की पड़ताल करती कहानी थी। हम आपको बता दें, इफी बीते एक साल में गुजरे सम्मानित फिल्म कलाकारों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है जो चले गए। उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है जब उनकी यादगार फिल्में प्रदर्शित होंगी और उन्हें चाहने वाले और परिवार वाले उनकी कला को देख पाएं, सुन पाएं। बप्पी लाहिरी, भूपेंद्र सिंह, के, लता मंगेशकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित बिरजू महाराज, इन सब को श्रद्धांजलि प्रस्तुत की जाएगी। सचिन। Yes, good evening to all our listeners, and we are coming to you live from the Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium here in Goa, where the 53rd edition of the International Film Festival of India is all set to get underway. This is Asia's oldest festival that started way back in 1952, just 1 year after the Berlin Film Festival started in 1951. So for the next 8 days in Goa, there will be movies and more movies. 250 plus films from different parts of the world will be screened, and not only just world cinema, we will also get to see the creme de la creme of Indian cinema in the Indian panorama, where there are 23 films which are selected. Apart from that, there is also a competition section where 15 films will be screened, including 3 Indian films. And I must tell you at this point that the prize money for the Golden Peacock for the best film is rupees 40 lakhs, and the total money, Rajashri, at IFFI is amongst the highest in the world. जी बिल्कुल। जी हाँ, जैसा अभी बताया आपको सचिन ने, श्रेष्ठ फिल्म को 40 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा जो निर्माता और निर्देशक के बीच बांटा जाएगा। निर्देशक को गोल्डन पीकॉक के साथ एक प्रमाण पत्र भी मिलता है, निर्माता को भी एक प्रमाण पत्र मिलेगा। श्रेष्ठ निर्देशक को 15 लाख रुपए की राशि के साथ सिल्वर पीकॉक और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। श्रेष्ठ अभिनेता को 10 लाख रुपए की राशि के साथ सिल्वर पीकॉक और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। श्रेष्ठ अभिनेत्री को 10 लाख रुपए की राशि के साथ सिल्वर पीकॉक और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विशेष जूरी पुरस्कार विजेता को 15 लाख रुपए की राशि के साथ सिल्वर पीकॉक और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिसमें जूरी के विशेष पक्षों का उल्लेख कर सकती है, व्यक्ति विशेष के कला योगदान का भी उल्लेख किया जा सकता है और ये पुरस्कार फिल्म के निर्देशक को मिलेगा। सचिन। Yes, indeed. And in a departure from the past, we had the red carpet of the opening film Alma and Oscar, which is an Austrian film. That opening film was screened at 2:30 in the afternoon, and that's going to be followed now by this opening ceremony. Traditionally in the past, first we had the opening ceremony, which was followed by the opening film. But let us tell you a little bit about where we are right now. This is Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium, which can easily accommodate up to 6,000 people. And I can see that right now it is quite packed. People are still walking in, waiting for the dignitaries to arrive. एंड फिल्म फेस्टिवल की जब बात होती है तो ग्लैमर की भी बात होती है, तो हमारे सुनने वाले सोच रहे होंगे कि यहाँ गोवा में कौन कौन आने वाला है, आज कौन कौन आने वाला है और अगले 8 दिनों में कौन कौन आने वाला है। बिल्कुल, हमने तो सुना है कि भाई अजय देवगन और सुनील शेट्टी, वरुण धवन का परफॉर्मेंस है यहाँ पर, सारा अली खान होंगी, और कौन कौन आ रहे हैं? और कार्तिक आर्यन का भी परफॉर्मेंस होगा। पंकज त्रिपाठी एक मास्टर क्लास करने वाले हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एक मास्टर क्लास करने वाले हैं, उसके अलावा आर बाल्की और गौरी शिंदे उनकी भी एक मास्टर क्लास होने वाली है, प्रसून जोशी भी एक मास्टर क्लास करने वाले हैं। तो बहुत सा ग्लैमर, बहुत सा टैलेंट, बहुत से एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स
यहाँ अगले 8 दिनों में आने वाले हैं। सचिन, बहुत खूबसूरत तरीके से मंच सजाया गया है। हम देख सकते हैं पीले, नीले, लाल रंग के जो कलरफुल लाइट्स हैं यहाँ पर, और बहुत सारे फ्लैश लाइट्स हैं। मंच के दोनों तरफ बहुत बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है, जिससे कि पीछे के लोग भी बहुत अच्छी तरह से देख सकें आगे क्या हो रहा है। और पूरी तरह से ये हॉल जो है वो भरा हुआ है। लोग उत्सुक हैं कि जल्दी ही कार्यक्रम शुरू हो और वो उसका आनंद ले सकें। लेकिन हम भी यहाँ पर इंतजार सब कर रहे हैं। हमारे जो गणमान्य अतिथि हैं वो थोड़ी ही देर में यहाँ आएंगे और हमारा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। हम देख सकते हैं लोगों को एक दूसरे को हाथ हिलाते हुए यहाँ पे, और कुछ विदेशी अतिथि भी यहाँ पर आ रहे हैं धीरे धीरे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। और वैसे तो गोवा का मौसम बहुत अच्छा रहता है। थोड़ी गर्मी थी आज हम जब यहाँ आ रहे थे। आपने देखा सब जगह रास्तों पर पीकॉक बनाया हुआ था। Yes, रंग बिरंगा सा बिल्कुल। Yes, peacock is not only a national animal, but it is also bird. national bird. I'm sorry, bird. Yes, Bilkul. correction. So it's a national bird, and it is also the prize that is awarded for the best film. There's a certificate of merit given along with a golden peacock. And as we speak, we can see a host of dignitaries that are taking their seat right now. That includes Shri Anurag Thakur, the Honorable Information and Broadcasting Minister, Dr. L. Murugan, the Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Shri P.S. Sridharan, the Honorable Governor of Goa, Shri Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa, along with other dignitaries. That includes Puneet Kumar Goyal, the Chief Secretary of Goa, Mr. Apurva Chandra, the Secretary INB, and the steering committee members. That includes well-known producer Bobby Bedi, actress Rishita Bhatt, Aishwarya Rajnikant, director Nikhil Mahajan, Prasoon Joshi, the lyricist, Ravi Kottakara, Shujit Sarkar, the well-known director, and Vani Tripathi, the actress, along with Mr. A.K. Beer, who's the technical committee chairman. So not only all these people, there are many, many more who are expected to grace this occasion. Of course, that also includes the jury members. बिल्कुल, और सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और जैसे ऐसा लग रहा है कि उनकी फिल्मों की बातें होंगी। और इतने सारे दर्शक जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज का इस कार्यक्रम का जो मंच संचालन है वो अपार शक्ति करने वाले हैं। हम अपने सुनने वालों को ये बात बता दें। और हाँ, अब महान फिल्मकार सत्यजीत रे के 100 वर्ष पूरे होने पर उनके नाम से दिया जाएगा इसमें सिल्वर पीकॉक और 10 लाख रुपए की राशि होगी। Yes, indeed, and it was named after Satyajit Ray last year when they celebrated the centenary of the great director and Martin Scorsese. Yes, और देखो ना, सुनील शेट्टी भी यहाँ पर आ चुके हैं और लोग उनसे मिल रहे हैं। सचिन उनको ग्रीट कर रहे हैं और शायद कुछ ऐसा सवाल उनसे पूछ लिया गया है कि खामोश होकर वो सुन रहे हैं और अब जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह के सवाल, इस तरह का सामना तो इन एक्टर्स का होगा ही यहाँ पर, है ना? Yes, absolutely. They're all walking down the red carpet, and as we mentioned, a host of dignitaries have already arrived here. In fact, that is the cast and crew of the opening film, Alma and Oscar, which was screened earlier in the afternoon at 2:30 p.m. So they finished the film. They probably had a Q&A session with the audience, and now here they are for the opening ceremony, and they are taking their seats right now. And we are talking about Sunil Shetty, and a host of other actors and actresses are expected to grace this occasion. But we were talking of the international jury. It is going to be headed by Nadav Lapid, who is an Israeli filmmaker, और उनकी फिल्म थी किंडरगार्टन टीचर, उसको गोल्डन पीकॉक मिला था 4 या 5 साल पहले. So he's going to be the chairman of the jury, and the Indian representation in the jury will be by Sudipto Sen, along with Jinko Gotoy and Javier Angolo. And there's also Pascal Chavens, who will be a member of the 5 people who have been chosen and who have to do the difficult task of deciding who will get which award. और अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें जहां पर वो खड़े हैं। और लेकिन लोगों का मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो जारी है। और अपने जिसे कहते हैं कि महबूब लेखक से या एक्टर से या इससे मिलने के अंदर, लोगों को जो मिलने के अंदर एक उत्कंठा होती है ना, वो भी यहाँ देखने को मिलती है। एक और बात हम आपको बता दें कि इस बार एक सरप्राइज रखा गया है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के नाम से एक सेक्शन की शुरुआत हुई है, जिसमें नए प्रतिभाशाली फिल्म मेकर्स को इनवाइट किया गया है। और ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि फिल्म निर्माण से जुड़ी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जा सके।
Yes, there's lots happening at International Film Festival of India this year. Film Bazaar, which is an integral part of IFFI, which was missing in the last two editions, in the 51st and the 52nd edition because of the pandemic. Well, it returns once again this year, and it will be held in physical form, and there are lots of filmmakers who will showcase their work, who will try to sell their films and look for a buyer, look for sales agents. And Film Bazaar, it's one of the biggest gathering of filmmakers here, which is going to take place from 21st to 24th. But when we talk about film festival, Rajeshri, the focus is always on films. And tomorrow, the Indian Panorama is going to be inaugurated with a film called Hadilentu by Prithvi Konnur, who is a young dynamic filmmaker. This film also premiered at the Busan Festival earlier this year and received quite a few laurels at other festivals also. So 21st, that's tomorrow in the afternoon around noon, is when the Indian Panorama is going to get inaugurated. And there are lots of films that will be screened as a part of Panorama. Avinash Arun, who is a cinematographer who shot films like Masan, his new film with Shefali Shah called Three of Us is also going to be screened along with Anant Mahadevan's The Storyteller, with Paresh Rawal in the lead role, and that is a tribute to Satyajit Ray. बिल्कुल। और सचिन, जब से यहाँ गोवा में फिल्मोत्सव का आयोजन होने लगा तो गोवा फिल्म उद्योग को भी बहुत बढ़ावा मिला, और यहाँ के कलाकार जैसे लक्ष्मीकांत शेटगांवकर, राजेंद्र तालक, साईनाथ उसकईकर, जितेंद्र शिकेरकर, ये बहुत उल्लेखनीय नाम है यहाँ पर, और उनको भी खास स्क्रिप्ट और खास तरह की कहानियों पर काम वो कर रहे हैं। यहाँ लघु फिल्में ज्यादा बनती हैं, फीचर फिल्मों की रफ्तार अभी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन भविष्य में हम जल्दी ही इस तरह की भी फिल्में देख पाएंगे। और कोंकणी लघु फिल्म वागरो, जिसका मतलब है प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस, युवा फिल्म मेकर साईनाथ उसकईकर ने बनाई, और वो पता है शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में कांस में दिखाई गई। पेशे से तो वो साईनाथ इंजीनियर हैं, लेकिन फिल्मों के निर्माण के लिए बहुत पैशनेट हैं। Yes, indeed. He is a student of FTI, that's the Film and Television Institute of India in Pune. And as we speak, we can see the Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Thakur, along with Varun Dhawan. They are walking the red carpet. Varun Dhawan is dressed in a white suit, looking very elegant with his glasses on. And Shri Anurag Thakur, the Honorable Minister for Information and Broadcasting, sharing his thoughts about the festival and more. बिल्कुल, लोगों को उन्होंने ग्रीट किया, और हमारे आईएनबी मिनिस्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल वाइट सूट है ये, सचिन देखने से तो यही लग रहा है, या फिर हाँ, वाइट सूट और ब्लैक पैंट्स उन्होंने पहन रखा है। उनके साथ वहां पर और भी जो हमारे मीडिया के कर्मी हैं वो खड़े हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और अभी वो फिल्म गए थे देखने के लिए जो हमने जिसकी बात की, जिससे ओपनिंग होनी थी, और हम आपको बता रहे थे कि भाई सत्यजीत रे 100 वर्ष पूरे होने पर उनके नाम से दिया जाएगा पुरस्कार, जिसमें सिल्वर पीकॉक और 10 लाख रुपए की राशि भी है। वर्ष के भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार विजेता को भारतीय फिल्मों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 10 लाख रुपए की राशि, एक शॉल और सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया जाएगा। 2013 में वहीदा रहमान को भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के लिए शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। Yes, and this time the Lifetime Achievement Award will be presented to the well-known Spanish director Carlos Saura, whose retrospective will also be screened with some 7 or 8 of his very, very well-known films. Carlos Saura, he's going to turn 91 in the month of January, so unfortunately he can't make it here, but I believe that his daughter is here in Goa, and shortly we'll also see an audio-visual presentation about Carlos Saura's movies. He's a legend, a living legend in the world of cinema. So lots of movies to look forward to. There are more than 250 movies in different categories. Is saal there is also a section where 4 horror movies are going to be screened. Are you looking forward to that? बिल्कुल, मैं बताने ही वाली थी कि भाई 4 हॉरर फिल्में जो हैं इस बार शामिल की गई हैं, और मैं अपने श्रोताओं को वो नाम जरूर बताना चाहूंगी। हैचिंग, हुसेरा, द नाइट साइरन और वीनस। या उसमें से मैंने 2 फिल्में देखी हुई है। कैसी लगी? सच में डरावने वाली थी बहुत? उतनी डरावनी नहीं थी, लेकिन इट्स वेरी वेल डन। सो नाउडेज इफ यू सी द ट्रेंड ऑफ हॉरर फिल्म्स कि वो घर में भूत है, वैसी कहानियां आजकल होती हैं। व्हाइट साड़ियां पहनकर कोई जा रहा है, कैंडल लिए हुए हाथ में। बिल्कुल, वो दिन तो चले गए कब के। These are more of psychological thrillers which explore new dimensions, which explore something new. And well, the 2 films that I have seen, both are excellent. And we can see Varun Dhawan, who is on the red carpet now. As I mentioned, is wearing a grey tie and a white suit.
as the Honorable Minister for Information and Broadcasting looks on. Varun Dhawan is here. He's also going to be performing, and his new film called Bhediya, which is supposed to be a thriller of sorts, is also releasing shortly. ओके और हम आपको ये भी बता दें कि भाई फीचर फिल्म जूरी का नेतृत्व विनोद गणात्रा कर रहे थे और पैनल में ए कार्तिक राजा आनंद ज्योति वगैरह भी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये अपने जो बहुत खूबसूरत गीतकार हैं प्रसून जोशी, यस, वो भी आ चुके हैं यहाँ पे और जिस तरह से as I mentioned earlier, he's going to be conducting a master class on songwriting, and he's a regular feature at IFFI. We see him almost every other year at the International Film Festival of India, and he's an integral part of it. And we can see Bobby Bedi next to him, the well-known producer who produced films like The Bandit Queen back then, which was directed by Shekhar Kapoor. He is also a member of the steering committee. ब्लैक सूट में प्रसून जोशी बहुत अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पर जो सवाल जवाब उनसे किया जा रहा है, बहुत जिसे कहते हैं कि चेहरे पे शांत भाव से वो हर तरह के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन प्रसून जोशी के गीत बेहतरीन होते हैं सचिन, और वो जो पहला ही गीत तो उन्होंने बहुत लिखे हैं, लेकिन उस गीत से ना एक अलग सी पहचान बनी उनकी। Yes, indeed, and not only he's a prolific songwriter, but he's also a member of or rather he is the chairman of the Central Board for Film Certification, also known as CBFC. And in fact, this is the first time that NFDC is going to be organizing IFFI. Earlier this year, the cabinet took a decision to merge the Directorate of Film Festivals, the Children's Film Society, the National Archives of India, along with Films Division, and they all combined as NFDC now. So the National Film Development Corporation will be looking after all these divisions, and the streamlining of that is still in progress. So we can say that a new organizer of sorts for IFFI this year, along of course with the Entertainment Society of Goa, which looks after all the logistics in Goa. इस साल समापन समारोह में पॉलिश फिल्म परफेक्ट नंबर दिखाई जाएगी और मणिपुर सिनेमा के 50 वर्ष पूरे होने पर 5 फीचर फिल्म और 5 नॉन फीचर फिल्म मणिपुर स्टेट फिल्म्स डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा बनाई गई है, जो प्रदर्शित होगी इंडियन पैनारोमा में। और गोवा सेक्शन में 7 नॉन फीचर फिल्म दिखाई जाएगी। ओरोधो दिस, जिसका मतलब है आधा दिन, उसके बाद बिफोर आई स्लीप, द वाइट शर्ट, वाइट विंड चाइम्स, द वाइट ड्रीम्स और गोयम स्वतंत्र तोयचे, यानी कि गोवा की स्वतंत्र हवन कुंड, इस तरह की फिल्मों के नाम है, बेहतरीन दिखाए जाएंगे। और निमन्या दिशा जिसका मतलब है आखिरी दिन। Yes, indeed, and you mentioned about the closing film, that's going to be Perfect Number, directed by Ristov Zanussi, who is again a legendary name in the world of cinema. In fact, Zanussi was a Lifetime Achievement Awardee in 2012. He's almost 83, 84 years old or thereabouts, but his passion for cinema is there for everyone to see. And in fact, the closing film, Perfect Number, is also part of the competition. सचिन, आप बता रहे थे कि यहाँ आने से पहले आप उनको भी देख पाए जो कई वर्षों से, ऑलमोस्ट ही इज 85 ईयर ओल्ड, और वो हर साल यहाँ पर आते हैं इस फेस्टिवल में और हर वर्ष वो इसका हिस्सा बनते रहे हैं। इसका मतलब कि कितना ज्यादा उनका जुड़ाव रहा होगा फिल्मों से। Yes, indeed, and there are lots of delegates, lots of media personnel who come to IFFI every year. Come rain, come sunshine. Some of them took a break for the 51st and 52nd edition. Both of them were held in 2021. In 2020, there was no IFFI at all because of the pandemic, but the 51st edition was held in January, and the 52nd edition was held in November of 2021. But here we have gathered here in Goa now once again for the 53rd edition, which will kick off shortly, as we can see a lot of dignitaries making their way inside and walking into the auditorium, including Varun Dhawan and also the Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Thakur. And as we mentioned earlier, a host of other dignitaries are also expected. हाँ सचिन, और लगभग 7,000 डेलीगेट्स के यहाँ होने की संभावना की जा रही है, क्योंकि काफी रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं और पणजी में 500 फिल्मों का प्रदर्शन होगा। आपने ये भी बताया 12 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में और 3 भारतीय फिल्में होंगी। भारतीय फिल्मों में मुझे लगता है अपना द कश्मीर फाइल्स है और द स्टोरी टेलर है और एक फिल्म और, आप बताएं, चलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ। Yes, I am trying to figure out which was the third film in the competition section, but yeah, you're right. It is one of them is Kashmir Files, the other one is Storyteller, and the third film is a Tamil film called and
please excuse me if I get the pronunciation wrong. It's called Kudangu Pedal, which is about a father trying to teach his children how to cycle. वाओ, हम सब ने बचपन में इन चीजों से हम गुजरे होते हैं, लेकिन एक लेखक जो होता है वो कितनी शिद्दत से इन चीजों को सोचता है और फिर वो एक तरीके से एक इमेजिन करके सारी चीजों को लिखता है, और जब वो पर्दे पे दर्शाया जाता है तो कितनी आसानी से हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं. फिल्में ऐसी ही कुछ होती हैं. सचिन, आप भी फिल्म बाफ हैं, मुझे पता है. Yes, indeed. And the beauty of cinema is you get to learn so much. You get to see other cultures. You get to see other styles of filmmaking. ज़्यादातर होता ये है कि हम लोग हॉलीवुड फिल्में देखते हैं या तो बॉलीवुड फिल्में देखते हैं, उनमें एक स्पेसिफिक तरह की स्टोरी होती है. लेकिन ये जब आप फॉरेन फिल्में देखते हैं कि जापान में कैसी फिल्में बनती है, ईरान में कैसी फिल्में बनती है, फिलीपींस में कैसी फिल्में बनती है. वैसे एक फिलीपीन डायरेक्टर है लव दियाज नाम के जी, उनकी एक फिल्म है जो 8 घंटे 5 मिनट की है. 8 घंटे? इस साल उनकी फिल्म कॉम्पिटिशन में है, व्हेन द वेव्स आर गॉन. वो सिर्फ 3 घंटे 5 मिनट की है. उनकी एक और फिल्म थी, वो 5 घंटे 10 मिनट की थी. और जो नॉर्थ एट द एंड ऑफ बिगनिंग करके फिल्म है, वो 8 घंटे 5 मिनट की थी. क्या आप देखनी चाहेंगे ऐसी फिल्म? बिल्कुल देखना चाहूंगी. वक्त बस इतना सा चाहिए और जरूर देखूंगी, क्योंकि फिल्में देखने का शौक मुझे भी है सचिन. और स्पेनिश फिल्मों के जाने माने निर्देशक जिनका जिक्र भी आपने किया था, जिन्हें पुरस्कार विजेता कार्लो सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है. और इस समारोह का मुख्य आकर्षण इस बार फ्रांसीसी फिल्में होंगी. सचिन ने ये भी बात बताई. दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित चर्चित अभिनेत्री आशा पारिख की फिल्मों का विशेष पुनरावलोकन होगा उनके सम्मान में, जिनमें उनकी 3 फिल्में तीसरी मंजिल, 2 बदन और कटी पतंग शामिल है. अपने समय की ये सुपरहिट फिल्में थीं. और गाने याद हैं आपको सचिन? मोहम्मद रफी की आवाज में वो नसीब में जिसके जो लिखा था, वो तेरी महफिल में काम आया, या फिर इस भरी दुनिया में दिल को समझाने कहाँ जाएं. The icing on the cake is ना सिर्फ वो फिल्में दिखाने जाने वाली है, but Asha Parekh will be present here for an in-conversation session. So it's going to be a remarkable time. I'm sure it's going to be a memorable time that's going to come for all film buffs here to see Asha ji in person and talk about her movies. आपने ये 3 फिल्में देखी थी सचिन? हाँ, बिल्कुल देखी हुई है, बिल्कुल देखी हुई है. लेकिन मैं एक फिल्म की जिक्र करता हूँ आपसे. हाँ. सब लोग सोचते हैं कि फिल्म फेस्टिवल मतलब सिर्फ 8 फिल्में होती होंगी. मसाला कहाँ आता है? तो मसालेदार फिल्में भी है. तो एक फिल्म दिखाने वाले हैं, रौद्रम रणम रुधिरम. तो ये शायद टाइटल आपने सुना नहीं होगा, लेकिन अपने RRR का नाम जरूर सुना होगा. बिल्कुल बिल्कुल, सुपरहिट फिल्म थी ये. So that film is also going to be screened as a part of the Indian Panorama. So the Indian Panorama has a film which is selected by the jury members, and there are also 5 films which are recommended by the federation, and those are usually mainstream films, which includes RRR. हर्षिता भट्ट भी आ चुकी हैं यहाँ पर. Yes, she is a member of the steering committee, and she is expressing her views to the media personnel outside. So most of the steering committee members are here right now, and we are just awaiting the arrival of a few other dignitaries before the show can kick off. And it's going to be Apar Shakti Khurana, the well-known actor and anchor, who will be presiding over today's evening as the host. बिल्कुल. और हम एक बार फिर आपको बता दें कि भाई 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विश्व की जानी मानी हस्तियां न केवल वाक करेंगी, बल्कि अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगी. भारत की तरफ से वरुण धवन, सारा अली खान, कार्तिक आर्यन, अजय देवगन, इसमें कुछ लोग यहाँ पर आ भी चुके हैं. 69 देशों से 280 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी. विश्व फिल्म हस्तियों के साथ बातचीत के सत्र होंगे और कार्यक्रम का समापन हिंदी फिल्मों के कलाकारों की प्रस्तुतियों से होगा. फिल्म उद्योग और बाजार बढ़ाने के लिए अलग अलग पेविलियन में फिल्मों का प्रदर्शन होगा और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि विदेशी फिल्मकार उन प्रतिभाओं के काम से परिचित हो सकें. Yes, indeed. And well, talking about more films, there are a couple of sections which everybody usually looks forward to, because you don't get to watch those movies in the theater. One of them is Cinema of the World, where you get to see films from all over the globe. And the other is a section called Festival Kaleidoscope, where they pick films from some of the best festivals. That includes the Cannes Film Festival, the Berlin Festival, the Venice Festival, the Toronto Festival, the Sundance Festival. और यहाँ पे जिन फिल्मों को अवार्ड मिले हैं, वो फिल्में यहाँ इफी में दिखाई जाती है. नॉर्मली जो कैलेंडर शुरू होता है वो बर्लिन से शुरू होता है. सबसे पहले फरवरी में बर्लिन फेस्टिवल होता है, उसके बाद कैन फिल्म फेस्टिवल होता है, उसके बाद टोरंटो होता है, वेनिस होता है. तो
यहाँ पे जिन फिल्मों को अवार्ड मिला होता है वो फिल्में भी इफी में दिखाई जाती है, और ये फिल्में नॉर्मली थिएटर में आती नहीं है. सो इट्स अ ग्रेट एंड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल फिल्म लवर्स टू कैच अप अपॉन दीज मूवीज. जो 12 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी वो हैं परफेक्ट नंबर, रेड शूज, अ माइनर, नो एंड, मेडिटरेनियन फीवर, कोल्ड एज मार्बल, व्हेन द वेव्स आर गॉन, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, द लाइन, 7 डॉग्स, मारिया द ओशन एंजल, नेजू, द कश्मीर फाइल्स, द स्टोरी टेलर और कुरांगू पेडल. Yes, indeed, and that looks like a very interesting lineup because just look at the names. We have Krzysztof Zanussi, the well-known Polish filmmaker, competing in the international competition for the Golden Peacock. We had the Love the Hours film, When the Waves Are Gone. We have a film for Argentina called 7 Dogs, where this man takes care of, well, what else but 7 dogs. We have Red Shoes, which has received couple of awards at different festivals around the world. So on 28th, during the closing ceremony, it will be revealed as to who will win the Golden Peacock, the Silver Peacock, and a bunch of other awards that will be given during the closing ceremony. There is also an ICFT UNESCO Gandhi Medal, which is started about 4 or 5 years ago, and there are a bunch of films that are competing in that section as well. हम आपको बता रहे थे पुरस्कारों के बारे में, तो ये भी बता दें कि किसी निर्देशक को श्रेष्ठ डेब्यू फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार दिया जाएगा जिसमें उसने अपनी पहली फिल्म में विश्व क्षेत्र के नए प्रतिमानों को छूने की क्षमता का प्रदर्शन किया है. इस विजेता को 10 लाख रुपए की राशि, सिल्वर पीकॉक और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा. And as a mark of respect to the people who left us during the last 1 year, homage will be paid to Bappi Lahiri. Disco Dancer will be screened. मजा आएगा बड़ी स्क्रीन पे देखने में. भूपिंदर सिंह, the well-known singer, Mausam will be screened, which was directed by Gulzar. KK, his film, the playback singer who had an untimely death, his film Bhool Bhulaiya will be screened. Apart from that, KP Lata, her film Shantam will be screened along with Krishnam Raju, whose film Jeevan Tarangulu will be screened. And of course there's also a tribute to the Nightingale of India, Lata Mangeshkar, where Abhiman will be screened, which has so many memorable songs with some haunting music by the one and only Sachin Dev Varman. Pandit Birju Maharaj will pay a tribute to him with the screening of Dedish Kiya, and a well-known Santur maestro and music composer Pandit Shiv Kumar Sharma also left us earlier this year. So Lamhe will be screened as a part of that. Ramesh Dev, the well-known मराठी कैरेक्टर एक्टर होते थे वो, बिल्कुल. और उनकी फिल्म सरस्वती चंद्र दिखाने वाले हैं. रवि टंडन, दी वेल नोन डायरेक्टर, उनकी अनहोनी दिखाने वाले हैं. तिरुड़ा तिरुड़ा मणिरत्नम की वो भी दिखाने वाले हैं एज अ ट्रिब्यूट टू सलीम घोष. एंड सावन कुमार टाक, हु वाज अ वेरी वेल नोन नेम, सौतन के लिए दिया जा रहा है और वो फिल्म दिखाई जाएगी. शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है. बिल्कुल. सो सौतन विल आल्सो बी स्क्रीन. सो देयर इज अ इंटरेस्टिंग मिक्स. शिव कुमार सुब्रमण्यम, the name may not be familiar to everybody, but अगर आप उनका फोटो गूगल करेंगे तो सबको याद आ जाएगा कि शिव कुमार सुब्रमण्यम कौन थे. तो उन्होंने परिंदा में एक्टिंग की थी विद विनोद चोपड़ा की मूवी, तो वो भी दिखाने वाले हैं. इसके अलावा रवि टंडन की अनहोनी, सलीम गौस की थिरुड़ा थिरुड़ा, आपने बताया शिव कुमार टाक, सावन कुमार टाक और शिव कुमार शर्मा, जी हाँ, उनकी शिव कुमार सुब्रमण्यम भी है, उनकी एक फिल्म होगी परिंदा जो दिखाई जाएगी यहाँ पर. तरुण मजुमदार के लिए फिल्म निमंत्रण दिखाया जाएगा यहाँ पर. और इसके अलावा केपीएससी ललिता की फिल्म शांतम भी दिखाई जाएगी. सचिन, आप कुछ सोच रहे हैं, किसी फिल्म के बारे में सोचने लगे? I was also talking about, there are so many lovely old classics that are being screened. There are also some restored classics. So the India Film Heritage Foundation, they do a lot of work on restoring our old films. And as a part of that, Ganashatru, Satyajit Ray's Ganashatru will be shown with Dhritimant Chatterjee in it. And there's another Ray film which is going to be shown, and that is Shatranj Ke Khiladi with Saeed Jafri and Sanjeev Kumar in the lead role. In fact, शतरंज के खिलाड़ी का जो वॉइस ओवर है, इंट्रोडक्शन, आपको मालूम है किसने किया था? किसने किया था? अमिताभ बच्चन ने. क्या बात है. So शतरंज के खिलाड़ी will be screened, and a bunch of other films also, which includes Sankarabharanam, the well-known film from South India, which is a cult classic that has also been restored. So watching some of these old films is also going to be fun. There is also a tribute that is going to be paid, and there is a screening of the Stanley Kubrick classic 2001: A Space Odyssey, which was a landmark film in the history of cinema. और मजे की बात यह है कि जो जहाँ फेस्टिवल हो रहा है जिस मल्टीप्लेक्स में, वहाँ पे
बहुत बड़ा स्क्रीन है, बहुत ही बड़ा स्क्रीन है. मतलब it starts from the ground and it touches the ceiling. तो 2001 A Space Odyssey, which is a well-known science fiction film, it is going to be screened in that auditorium. तो वहाँ देखने का मजा ही कुछ और होगा. और कार्तिक आर्यन भी आ चुके हैं, हमने देखा अभी उनको. सचिन, बस थोड़ी ही देर में मुझे लगता है कि हमारा जो रंगारंग कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और हमारी इस कार्यक्रम के जो लोग हैं, गणमान्य अतिथि हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच रहे हैं. भारतीय पैनोरमा IFFI का प्रमुख घटक 1978 में सिनेमाई कला की मदद से देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत के साथ साथ भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए त्योहार की छतरी के हिस्से के रूप में पेश किया गया था और आज हम यहाँ हैं. उसकी ही देन है ये. महानंदा, 3 of Us, सिया, द स्टोरी टेलर, ढाबरी कुरुबी, नानू कुसुमा, लोटस ब्लूम्स, सऊदी वेलाकर, फ्रेम, शेर शिवराज, एकदा काया, जला, प्रतीक्षा, कुरुंगू पेडल, किडा, सिनेमा बंदी और कुधिराम बोस के साथ और भी कई प्रविष्टियां हैं. और इस सेगमेंट का मेन स्ट्रीम सिनेमा सेक्शन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सबसे सफल फिल्मों में से 2 द कश्मीर फाइल्स और RRR के साथ टॉनिक, अखंड और धर्मवीर, मुक्कम पोस्ट ठाणे को भी दिखाया जाएगा. Yes, and IFFI will also pay a tribute to one of the greatest filmmakers, one of those groundbreaking filmmakers of all time, Jean-Luc Godard, the French filmmaker who passed away earlier this year. And there are about 8 of his films which will be screened, including the groundbreaking Breathless, Contempt, Pierrot Le Fou, See You Friday, Robinson, and Alphaville. So that is also something to look forward to for all those who like old classic. And as we speak, we can also see the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, who is present here in the auditorium along with the Honorable Governor of Goa, P.S. Paresh Rawal. And Paresh Rawal is also here. His film Storyteller, which as we mentioned is a tribute to Satyajit Ray, directed by Anant Mahadevan. उनके ठीक पीछे सचिन शुजीत सरकार बैठे हुए हैं. Yes, he is a member of the steering committee, if I'm not mistaken. And we can also see Ajay Devgan making his way in. Tomorrow there's going to be a very special screening of Ajay Devgan. और अजय देवगन का और गोवा का एक खास संबंध है क्योंकि उन्होंने काफी सारी फिल्में शूट की. दृश्यम भी गोवा में बेस्ड है, गोलमाल भी गोवा में बेस्ड है और दृश्यम 2 यहाँ दिखाई जाने वाली है. जी हाँ, कल दृश्यम 2 दिखाई जाने वाली है. So I'm sure a lot of people are looking forward to that as well. And as we speak now, we can hear the signature tune of the International Film Festival of India, and that means the program is all set to get underway. Is that lovely tune of the International Film Festival of India with visuals, a video that was created by none other than Shaji Karun, the well-known Malayalam filmmaker. He was responsible for that signature tune, and it looks like now we'll see the host on stage very soon. 53rd International Film Festival of India, Goa, streaming free now only on Wood. हर साल की तरह इस साल भी IFFI दुनिया भर की फाइनेस्ट फिल्म्स और वर्ल्ड सिनेमा के स्टेलर क्रिएटर्स को एक साथ लाया है. So let's begin and let's invite our dynamic host on stage. He is a very talented actor. He is at the top of his game when it comes to singing, writing, composing and mind-blowing hosting. Please give a big round of applause for the maverick entertainer, a talent who is loved by millions in India, an actor par excellence जिसे आता है महफिल को सजाना, the very amazing अपार शक्ति खुराना. मंच संचालन के लिए अपार शक्ति को मंच पर आमंत्रित किया गया. So there we can see Apar Shakti Khurana there making his way to the center as the host for the evening. Oh my God, what a house full. And he's wearing a jacket, dark colored trousers, and I'm not sure if he's wearing socks. होस्ट करने के लिए आपको लगा मुझे पड़ेगा बुलाना. Hi, my name is Apar Shakti Khurana. It is indeed a great honor to be here in front of such an amazing audience.
And hello and welcome to the prestigious Geo True 5G presents 53rd International Film Festival of India, Goa. Streaming free on Voot, Colors and Color Cineplex, brought to you by India's Information and Broadcasting Ministry and NFDC, and hosted by Government of Goa and Entertainment Society of Goa. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए. And tonight's event is directed and produced by Wistcraft Entertainment Agency. And you know what? As a young boy, I used to eat, breathe and love cinema. And now to host an evening that marks the biggest celebration of cinema from across the world is a dream come true. So thank you for having me over. Tahe dil se shukriya aap sabka. Ladies and gentlemen, we have a lot in store for you today. But, before we begin, सबसे पहले करते हैं इस देश को प्रणाम, करेंगे सर्वप्रथम भारत माँ का सम्मान. Hence, I request everyone who all can to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय वंदे. क्या बात है. लव द एनर्जी इन द हॉल टुडे. देखो, अब सिनेमा कहूं या मोशन पिक्चर, इसका नाम लेते ही चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है. देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. ये जो दुनिया है ना, दुनिया, इसमें केवल दो तरह के लोग होते हैं. वन हु लव सिनेमा एंड द अदर हु ओनली लव सिनेमा, बिकॉज मूवीज मेक एवरीथिंग ऑल राइट. बिलीव मी, टू फील बेटर यू डोंट नीड अ मेडिसिन. एक मूवी का सीन ही असर कर जाता है. और हम इंडियंस अपनी फिल्म्स में बहुत प्राइड लेते हैं. यू नो व्हाट? क्योंकि फिल्म चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, कन्नड़ हो, पंजाबी, तेलुगु, भोजपुरी या फिर तमिल, हम उसकी सक्सेस पे ढेर सारी सीटियां बजाते हैं. बहुत लंबा सफर रहा है हमारी इन सभी फिल्मों का. फ्रॉम नो कलर टू द सिनेमा फुल ऑफ कलर्स, from no dialogues to the biggest dialogue bazi, from simple cinematic frames to visuals loaded with animation and VFX, from Raja Harishchandra to RRR. दादा साहब फाल्के साहब ने अपने हाथों में कैमरा क्या पकड़ा, रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन ने ऐसी हवा पकड़ी कि आज हर घर में बच्चे कैमरा उठाकर सिनेमा बनाने की सोच रहे हैं. We now live in a world where we create cinema and definitely cinema creates our world. प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे इस सिनेमा के जगत के लिए. वन ऑफ द फाइनेस्ट मेकर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स आर हियर. एंड दैट्स व्हाई हम यहां पर आए हैं टू सेलिब्रेट द जॉय ऑफ सिनेमा इन अ फैबुलस मैजिकल लैंड कॉल्ड जियो ट्रू 5G presents 53rd International Film Festival of India, Goa, streaming free now only on Voot. So from today to the 28th of November, we will be showcasing some amazing films to you all from across the world, and believe me, these 9 days will be the most memorable 9 days of any cinema lover's life. And that is a promise of those who have made this fantastic event possible. Give it up for the Directorate of Film Festivals of the Ministry of Information and Broadcasting in collaboration with the Goa government. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए. And thank you Goa government and IFI for providing us this fabulous platform and getting us all together. Okay, so मुझे लग रहा है रूम में एनर्जी बिल्कुल करेक्ट है, काफी ज्यादा माहौल बन रहा है. So ladies and gentlemen, now it is time to kickstart the opening ceremony on a grand note. You know what? In India, every important occasion begins by inviting and worshipping Lord Ganesha. That is why we say, उत्सव बिना गणेश जी के लगता हमें अधूरा है. प्रथम वंदना अगर उनकी ना हो तो कोई भी काम नहीं होता पूरा है. तो चलिए
गणेश वंदना प्रस्तुत करने आ रही हैं द वन who keeps her eyes on the stars and feet on the ground, जिनकी सिग्नेचर स्माइल करोड़ों इंडियंस के दिल की धड़कन बन चुकी है. Please welcome the actress who is racing to the top, one of my favorite actresses in the country. Please give it up for Mrunal Thakur. Apar Shakti Khurana there inviting Mrunal Thakur to present the Ganesh Vandana to start today's evening on an auspicious note. सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव. लंबोदर तू विनायका तू लोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू मेघदंत तू मयुरेश्वरा मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका.
Well, that was quite a spectacular dance performance there. Let's describe, Rajeshri, as to what was happening there. There were at least 30 or 40 people dancing there on the stage, and it was all very well synchronized बहुत ही with सुंदर। Mrinal Thakur in the lead. यस सबने नारंगी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और जो पुरुष थे वो श्वेत रंग का पायजामा कुर्ता और फिर ऑरेंज कलर की बंडी में। बहुत ही खूबसूरत दृश्य रहा। Light represents the positive, the good and the good spirits. It symbolizes truth, knowledge and understanding. By lighting a lamp, the lamp becomes a form of fire and it ensures success. Hence, now I request the honorary dignitaries to please come on the stage and light the traditional inaugural lamp. Can we please have all of you on the stage? Shri P.S. Sridhan, Honorable Governor Goa. Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Union IND Minister. Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State. Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister Goa. सारे गणमान्य अतिथियों को मंच पे आमंत्रण दीप प्रज्वलन के लिए। Secretary of Information and Broadcasting. INB Steering Minister Committee members. अनुराग सिंह ठाकुर, Ms. Rishita Bhatt, Nikhil Mahajan, प्रसून जोशी, हर्षिता भट्ट, ये सारे गणमान्य अतिथि मंच पर पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में दीप प्रज्वलन। यहाँ दर्शक दीर्घा में मनोज वाजपेयी को भी देखा गया, वो भी यहाँ पर हाजिर हैं और मंच पर सारे लोग तैयार दीप प्रज्वलन के लिए। Yes, as Rajeshri mentioned, there are a host of dignitaries, and as we speak, we can see the Honorable Governor of Goa, Sridharan Pillai, lighting the lamp, along with Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa, and the Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Thakur. Along with all the other dignitaries, we can see the Member of Parliament from Goa, Shri Shripad Naik also, along with Rishita Bhatt, who is a member of the steering committee. There's Vani Tripathi as well, who's also a member of the steering committee. So, galaxy of stars and dignitaries have gathered on stage. You can see Prasoon Joshi there. You can also see Dr. L. Murugan, the Honorable Minister of State for Information and सरकार Broadcasting. भी दीप प्रज्वलन में साथ दे रहे हैं सचिन और Yes, he's also a member of the steering committee. Lots of smiling faces there while they light the lamp to formally inaugurate the 53rd International Film Festival of India, which is going to be held in Goa now from today till the 28th of this month. बिल्कुल हमारी परंपरा रही है सचिन, किसी भी शुभ कार्य के पहले दीप प्रज्वलन एक जरूरी कार्य होता है जिसे किया जाना चाहिए और होता रहा है। बस अब धीरे धीरे सब आ रहे हैं दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए और फिर उसके बाद अगला कार्यक्रम। This edition of the festival promotes the art of film by providing a unique platform showcasing the best of cinema and providing an elevated cinematic experience with the power of Geo True 5G. इसलिए आगे बढ़ने से पहले to extend a formal welcome to all our distinguished guests, delegates and dignitaries, may I invite on the stage the Secretary of Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Shri Apurva Chandra. एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। So Parshakti Khurana, the host, inviting the Secretary of Information and Broadcasting, Shri Apurva Chandra, on stage to present his address. Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan ji, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur ji, Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant ji, Minister of State, Shri L. Murugan ji, and all of those present here who are in the business of creating the magic of movies, and the others like me who are fans and enjoy and immerse themselves into the magic of movies. I welcome all of you to the 53rd edition of IFI. Before I begin, I would like to read a special message from our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for this event IFI. प्रधानमंत्री का एक पत्र। This is a special message from our Honorable Prime Minister. It is heartening to learn about the 53rd edition of International Film Festival
organized jointly by the Ministry of Information and Broadcasting and Government of Goa from November 20th to 28th, 2022. For over a century now, cinema has captured the imagination of people the world over. Cinema reflects the social dynamics of our times as well as shapes it. Films have a unique ability to transcend barriers and establish an emotional connect with the audience. Movies entertain, educate, or even inspire people through their powerful storytelling. Their efficacy in becoming a vehicle of social transformation is truly unparalleled. India is blessed with a rich and diverse culture, an amalgamation of tradition with the modern. The history and art of storytelling in various Indian languages, ranging from prose, poetry, music, dance, plays, dramas, to cinema, enables us to celebrate our vibrant socio-cultural landscape. IFI and Indian cinema have carved out a niche for themselves on the global stage. Films in different Indian languages are reaching out to a larger international audience and are being increasingly appreciated across the world. As the biggest film festival of India, IFI promotes an invigorating synergy between delegates from different nations and societies united by cinema. I am sure that the interactions within this mini world congregating at Goa will facilitate deeper understanding and new learnings in the world of art. With its beautiful nature and vibrant culture, Goa provides the perfect backdrop to host the IFI. I am sure that Goa will spur the creative imagination of the participants, inspiring them to come up with new ideas to help cinema expand its outreach to an ever-growing audience. Best wishes to everyone associated with the film festival. May the 53rd edition of IFI be a resounding success. Signed, Narendra Modi. So after the inspiring words of the Honorable Prime Minister, where he has expressed confidence that IFI will facilitate deeper understanding and new learnings in the salubrious state of Goa, I would only add that IFI is a platform for Indian film industry to showcase its best before the world and to imbibe the best practices in cinema from the rest of the world. This year, our Honorable Minister Shri Anurag Thakurji and Shri Muruganji visited Cannes Film Festival. And India was the first country of honor at the Marché du Cannes. We learnt a lot from that visit, and this year we have tried to imbibe the learnings into the IFI at Goa. This and that you can see when the film market is going to be inaugurated tomorrow, where we have several countries, states, and industry pavilions being put up. This is the first time ever that such a large participation is there. Very smart pavilions have been put up by France, Dubai, Russia, and many state governments. And I am happy to announce that we have kept the entry open, not just to the delegates of the film market, but also to the delegates of the film festival, and also to the public of Goa between 3 and 6 p.m. every day. So we would like more and more people to come and visit this first ever effort at Goa. More than anything, a film festival is about films. This year, 280 films from 79 countries, 183 films will be part of the international programming. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपनी स्टीयरिंग कमेटी का, जिन्होंने इस बार बहुत मेहनत से इन फिल्मों को चुना है, और मुझे आशा है कि जो लोग फिल्मों के कॉनोसियर्स हैं, जो फिल्मों को देखेंगे, वो फिल्म्स को अप्रिशिएट करेंगे कि इस बार की फिल्मों में कैसे बदल आया है, और हमारा जो गोवा का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो
बढ़िया से बढ़िया होता जा रहा है. सो शेवटी मी असं म्हणेन की 2 वर्षापर्यंत कोविड होता. या वर्षी आपण कोविडमधून निघालो आहोत आणि या वर्षीच्या इफी जे आजपर्यंतच्या इफी आहे त्यापेक्षा चांगला आहे आणि यापुढे दरवर्षी मी हमी देतो की यापेक्षा चांगला होत जाणार आहे. धन्यवाद. सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपना संबोधन देकर अब आमंत्रित होने जा रहे हैं डॉक्टर आल मुरुगन, And now I would like to request मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर INB. Ministry of Information and Broadcasting, Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, अपने संबोधन के लिए Dr. L. Murugan, to share a few words. Please welcome him on the stage. Dr. L. Murugan, the Minister of State for Information and Broadcasting, is making his way to the stage to present his address at the inaugural of the 53rd International Film Festival of India. Governor of Goa, Sri P.S. Sridharan Pillai Ji, Honorable Minister of Information Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Sri Anurag Singh Thakur Ji, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant Ji, Secretary INB Sri Apurva Sandra Ji, and senior officers from Ministry of Information and Broadcasting, government officials from Government of Goa, ESG, and team NFDC, and the stars, celebrities here, our parliamentarians here, filmmakers, juries, actors, directors, and all personalities associated with the world of cinema, delegates, guests, friends from media, ladies and gentlemen, namaste, vanakkam to you all. Here I am welcome to this Asia's biggest film festival, the 53rd International Film Festival of India at Goa. Over the next 8 days, the film-loving delegates coming from all across the globe will enjoy the best of India and the world cinema. Away from the side of global COVID pandemic, this 53rd IFFI will be back to its vibrant festival, Avadar. Mr. Carlos Saura, the famous Spanish film director and writer, has been selected for this year Satyajit Ray Lifetime Achievement Award 2022. Mr. Saura, congratulate to you. Your contribution to the world of cinema over last 50 decades is unparalleled. I pay my respect to late Lada Didi, Pandit Birju Maharaj, and Tabussam, many others from the film fraternity who left us in last 1 year. We remain indebted to you forever. Ladies and gentlemen, in 1913 was the year when India started our journey in the world of cinema. Our movies picked the threads from our rich history and culture, our diverse regions and languages, and created the Indian cinema, whose influence today transcends beyond boundaries, beyond culture, and beyond language barriers. Sri Dada Sahib Palke ji, Sandaram ji, Sri Raj Kapoor, Satyajit Ray, MGR, Shivaji Ganesan, N.T. Ramarao, Dr. Rajkumar, and many others have literally carried the movie world over their shoulders, and today many from the distinguished audience here are able continuing this tradition. The journey started with Raja Harishchandra and traveled through Do Bigha Jamin, Bandini, Kagaz Ke Pool, Veerapandya Kattaboman, Padagoti, and other gems. These movies become the milestones in the journey, enhancing the appeal of Indian cinema the global scale. Friends, it is motto of Vasudeva Kudumbam. The whole world is the family.
the IFFI has been erasing boundaries within the world of art and film. This allows the different film cultures to engage with each other, explore the possibilities to collaborate and promote understanding the social and cultural ethos of world of cinema. The IFFI is about celebrating and releasing good cinema. Our Prime Minister Sri Narendra Modi ji has described the IFFI as the film festival that promotes an synergy between delegates from different nations and society united by cinema. The 53rd IFFI has everything that a true movie lover wanted, that Indian panorama, master classes, books to box office sessions, film bazaar, 75 creative young minds, and most importantly, the best of world cinema are lined up in this edition of IFFI. Honorable Minister Sri Anurag Singh Thakur ji is leading the front to establish India's position as the content hub of the world. Many initiatives like incentives for co-production in India, streamlining single window film facilitation service, incentives film shootings in India, tapping the huge AVGC potential and marching ahead under his able leadership. Let me also acknowledge the great contribution of state of Goa. Let Sri Manohar Parrikar ji's sustained effort made Goa as the permanent venue of IFFI. I salute his vision. The Goa state under the dynamic leader of Chief Minister Sri Dr. Pramod Sawant has put his tremendous effort to make this IFFI 53rd successful. Dr. Pramod ji, your concerned support for this cause is great source of strength of the IFFI. This warmth and hospitality of Goenkas is world famous, so enjoy the Goengan hospitality and get immersed in the IFFI. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Vanakkam. The Honorable Minister for State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugande, presenting his address. Felicitate our international jury of this year. For that, I would like to request our Honorable Union Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Sri Anurag Singh Thakur, and the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to please come on the stage. The host of our Shakti Khurana Day inviting the Honorable Minister for Information and Broadcasting, Sri Anurag Singh Thakur, and Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa, on stage to felicitate the 5-member jury at the International Film Festival of India. Chose a total of 15 films this year, 12 international and 3 Indian films to compete for the prestigious Golden Peacock Award at Geo True 5G presents 53rd edition of the International Film Festival of India, Goa, streaming free now on Woot. As we know, each year, a group of renowned filmmakers and cinema experts come together from different parts of the world to form the international jury who take responsibility of judging films. May I please request them to come on the stage. Ladies and gentlemen, please welcome the members of our international jury, Israeli writer and film director Nadav Lapid, French film editor Pascal Chavins, Spanish documentary filmmaker, journalist and film critic Javier Angelo Borteren, American film producer Jinko Gotho, and India's very own film writer and director Sudipto Sen. The 5-member jury of the international competition is being felicitated by the Honorable Minister for Information and Broadcasting as well as the Chief Minister of Government of Goa. Thank you so much, and thank you Sri Anurag Singh Thakur and Dr. Pramod Sawant for doing the honors. Thank you so much.
The 5-member jury is headed by Nadav Lapid from Israel. There is Jinko Goto. There is also Javier Baruen, along with Pascal Chavens and India's Sudipto Sen. As a 5-member jury, they make their way back into the audience, and we can also see the Honorable Minister for Information and Broadcasting, All right, Shri the Anurag Singh aim Thakur, of the along with Indian Dr. Pramod Panorama Sawant, the Chief Minister of organized Goa, by National Film making their way back Development to their seat. Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, is to select feature and non-feature films of cinematic and thematic and aesthetic excellence. From hundreds of entries this year, 25 feature films and 20 non-feature films will be showcased. I would like to first introduce the feature film jury of the year. The feature film jury is headed by the acclaimed director and editor, chairperson, Sri Vinod Ganatra, along with 12 distinguished film personalities. And they are Ashok Kashyap, Ananda Jyoti, A. Karthik Raja, Dr. Radha Singh, Anumala Prem Raj, Emo Singh, Jugal Debata, M. Geeta Gurappa, Shailesh Dave, Shibu G. Susalan, V. N. Aditya, and Vishnu Sharma. Please give a huge round of applause for the feature film jury of Indian Panorama. And now let me introduce the non-feature film jury of this year. The non-feature film jury is headed by the acclaimed producer, writer, and National Film Award winner, chairperson Sri Oyanam Doren, along with 6 other distinguished film personalities, and they are A. Chandrasekhar, Harish Bhimani, Manish Seni, P. Umesh Nayak, Rakesh Mittal, Sanskar Desai. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for the non-feature film jury of Indian Panorama. और अब बारी है एक बहुत ही अहम शख्सियत को स्टेज पर इनवाइट करने की. गोवा की शान, इफी की शान, the man of the hour who never ceases to amaze us with his dedication and visionary approach. Please welcome the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मंच की ओर अग्रसर. अपने संबोधन के लिए बिल्कुल तैयार. Good evening, everyone. Very warm welcome to each one of you who are here to witness the 53rd International Film Festival of India in our beautiful state of Goa. At the onset, I take this opportunity to welcome Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sridharan Pilleji, Union Minister of Information and Broadcasting, Sri Anurag Singh Thakurji, Union Minister for State for Information and Broadcasting, Dr. L. Muruganji, Union Minister for State for Tourism and Ports, Sri Sripad Naikji, Secretary for Information and Broadcasting, Sri Apurva Chandraji, special guest for the inaugural today, Sri Ajay Devganji, Sri Sunil Shetty ji, Sri Manoj Bajpayee ji, Sri Prabhu Deva, Sri V. Vijayendra ji Prasad, Sri Pankaj Tripathi, Miss Shreya Saran, members of the jury, my cabinet colleague, Member of Parliament, Sri Vinay Tendulkar ji, Member of Legislative Assembly, Chief Secretary Sri Puneet Goyal ji, Member of NFDC, Member of Steering Committee, CEO and Governing Body members of ESG, all the respected dignitaries from the film industry across the world who have gathered here, the member of the print and electronic media, and my brothers and sisters. We are at that time of the year when the filmmakers and enthusiasts from all over the globe are extended a warm welcome in our beautiful crown jewel of the Indian subcontinent that we all call Goa. Most of you have been constantly visiting Goa. For those who are here for the first time, let me reiterate that you are in that part of the world
where you can experience pristine seashore, peaceful hinterland, divine pilgrim sites, mesmerizing backwaters, mouth-watering cuisine, and most importantly, very warm and hospitable people. At this moment, as the curtains will be raised on 53rd IFFI, let us fondly remember our former Chief Minister, late Sri Manohar Bhai Parrikar, who translated his vision into reality and allowed Goa to be the permanent host for this extravaganza. The Government of Goa and the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, are jointly executing this festival through Entertainment Society of Goa and National Film Development Corporations between November 20th to 28th. This year, the state government has taken the initiative to curate the special masterclasses for Goan film fraternity. Renowned personalities from Hindi and Marathi film industry will be addressing masterclasses. A special Goan section has also been curated this year. A jury panel comprising of 3 members from Indian Panorama and who formed the jury for Goan section has selected 6 short films and 1 documentary film. We have been able to draw the attention of substantial number of tourists as well as the local public towards this program. Therefore, to enhance the participation of Goan and tourists, we have also curated the various peripheral activities such as the Festival Mile, Heritage and Entertainment Zone, etc. Festival Mile will have the parade of glimpses of Shimgotsav and Carnival on 26th and 27th November. Caravans will be deployed throughout Goa and popular movies will be screened for the masses. Open air screening to be carried out at Miramar Beach and also at the Joggers Park Altino and Ravindra Bhavan Margao. With the intention to make this event more inclusive, a special movie screening section has been curated for Divyangs along with the workshop in film and entertainment. We have tried to strike a balance for the film and entertainment industry with the general public for curating this festival. The opening and closing ceremony will see as many as 14 cultural performances featuring the top film celebrities from across India and will also include the music and dance group representing the France, Spain and Goa as well. As you all may be aware, India is celebrating 75 years of its independence. Therefore, in this Amrut Kal, the theme of the opening ceremony will be evolution of the Indian cinema in the last 100 years under the Azadi Ka Amrut Mahotsav celebration. As the Chief Minister of Goa, I take this opportunity to extend heartfelt gratitude to the Government of India under the able leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for the relentless support and guidance that his entire cabinet is extending the efforts of the Goa government in making the Goa one of the best performing state in terms of the relevant parameters and indicators of infrastructure development as well as the human development. Specifically, I would like to mention the support extended by Sri Anurag Singh Thakur ji and Dr. L. Murugan ji, the time and again in the successful organizing of this grand event. Dear friends, our Entertainment Society of Goa, in this nodal arm of our government, which provides the assistance to the stakeholders in the film industry in terms of conducting the shooting in the state of Goa. I am aware that the Goa, with its tremendous natural treasure, is the most ideal place for the film shooting behind Mumbai.
I'm also aware of the issue that our line producer come across while actually conducting the shooting, and I assure you of all the possible support from the government of Goa in this regards. I'm also glad that the film culture is strengthening its roots in our state, and some of our youngsters have started making their presence felt in the industry, may it be in the film or in an OTT platform. With the best rail, road, water and air connectivity with all parts of the country, and increasing pool of the trained and talented actors, writers, technicians, etc., Goa is your most ideal destination for the film shooting as well as the post-production. My government will promote the creations of an entire ecosystem required for making the films. Our aim is to create the hub with the world-class production, post-production and training facilities for the global media, entertainment and IT industry. Setting up of state-of-the-art film school will provide the opportunities to the Goan youth to acquire the required skills and education to become the eligible for the employment opportunities. I call upon the producer and investors to come forth and invest to scale up the film-related infrastructure in Goa, for which my government is committed to provide the necessary assistance. Very soon, my government will come out with a comprehensive policy and hassle-free action plan for the same. A long-pending dream of creating the permanent venue for the International Film Festival of India is become a reality. Setting up of the world-class convention center with multiplex and other associate infrastructure in an area of 25 acres is at the final stage of awarding the project on the PPP basis. Hopefully, in the year 2025, we will be able to celebrate the IFFI at the new venue. I wish all the delegates the very pleasant stay and also the very enriching experience through the various symposium, panel discussion, etc. at a part of the 53rd IFFI in Goa. समेस्त गोंयकारांक हांव परत एकदा आयच्या इफ्फी इनॉग्रलाक तुमकां खूब खूब स्वागत करता आनी आमच्या मदीं आयिल्ले सगळे आमचे गेस्ट माननीय अनुराग सिंग ठाकूर जी, अजय देवगण जी, सुनील शेट्टी जी हांचे नेटान ताळयो मारून तुमी गोंयच्या हातूंतल्यान सगळ्यांनी स्वागत करचें आनी परत एकदा इफ्फीचो आस्वाद घेवपा खातीर फुडले 9 दीस आमकां इंटरॅक्शन करपाक मेळटलें. वेरियस फिल्म इंडस्ट्रींतल्या एक्टर्सां कडेन, डायरेक्टरांसां कडेन ही गोंयकारां खातीर, आमच्या तरणाट्यां खातीर फिल्म इंडस्ट्रींतली बऱ्यांतली बरी संदी आसा. तिचो फायदो आमी सोडचे ना. जय हिंद, जय गोवा. The Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, addressing the gathering here at the 53rd International Film Festival of India. Stay back on the stage. Thank you so much. And I would also like to call upon the stage Honorable Union Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Singh Thakur, and the Honorable Minister of State, Ministry of I&B, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Dr. L. Murugan, and Honorable Governor, Goa, Shri P.S. Sridharan, to felicitate our honorary dignitaries today. Can we please have you on the stage, sir? मंच की ओर अग्रसर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर. कुछ लोग हैं जो सिनेमा में आते ही, कुछ लोग होते हैं जो सिनेमा में आते हैं और कुछ लोग जो सिनेमा कहलाते हैं. इनकी प्रेजेंस और एफर्ट्स के बिना शायद इंडियन सिनेमा उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जो जहां अभी तक पहुंचा है. These personalities are very special to the country and they have definitely some greatness in them. अब जिन्हें बुला रहा हूं वो अपने आप में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग है. He has been a flag bearer of good cinema in our country. लोग कहते हैं कि यार मनोज बाजपेयी इस फिल्म डेफिनेटली अच्छी होगी. Please welcome 3 times National Award winner Padma Shri
मनोज बाजपेयी जी। मनोज वाजपेयी ब्लैक रंग के सूट में मुस्कुराते हुए मंच की ओर अग्रसर, और आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है शॉल, स्मृति चिन्ह एनएफडीसी का और प्रतीक चिन्ह हाथ मिलाते हुए। मंच पर आसीन शॉल इस वक्त उनके गले में डाला, हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए उन्हें ये एनएफडीसी का स्मृति चिन्ह पेश करते हुए। Yes, the versatile actor Manoj Bajpayee there, looking dapper in a black suit, accepting the memorabilia at the hands of the governor and also the Chief Minister of Goa, who's present here, Dr. Pramod Sawant. And we are expecting a host of artists on stage. बिल्कुल सचिन, और जैसा उसने कहा अभी कि हम बस ये सोच ही लेते हैं कि उनकी फिल्म है तो यकीनन अच्छे होंगे मनोज वाजपेयी। सर ये जानना चाहता हूँ, देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन सिनेमा। जो तब का से पहले का सिनेमा था और जो आज का सिनेमा है बहुत बदल चुका है। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ डू यू सी दिस चेंज सर? क्या बदल चुका है जब से आपने स्टार्ट किया था और आज जब हम देखते हैं आपको? Yeah, I'm not that old. Question. सर सिनेमा जो है बहुत बदल चुका है जब आपने स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक। तो आपके हिसाब से क्या बदला है सिनेमा में? आपने क्या देखा है अपनी जर्नी से? नहीं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और तकनीक बदला है, सिनेमा कहानी कहने का ढंग बदला है। अभी हम लोग फ्लाइट में थे, मैं और परेश भाई और सुनील शेट्टी, हम लोग यही बात कर रहे थे कि आज सिनेमा जितना डेमोक्रेटाइज्ड हो गया है, जितना अलग अलग जगहों पर जा चुका है, हर कोई जो कहानी कहना चाहता है आज कहानी कह सकता है और हर कोई प्रतिभा कहीं से भी आ सकता है और वो एक मकाम बना सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की डेमोक्रेसी और इस तरह का कंटेंट का भरमार और इस तरह की प्रतिभा की भरमार शायद फिल्म इंडस्ट्री ने पहली बार देखा है। ये अपने आप में बड़ा सुखद है और मुझे खुशी होती है कि इस देश के किसी भी कोने से एक बड़ी प्रतिभा आती है और अचानक रातों रात छा जाती है, एक सबसे बड़ी बात है। क्या बात है। थैंक यू सो मच मनोज सर, कांग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहानी कहने की क्षमता बढ़ गई है, कहा मनोज वाजपेयी ने, और मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए धीरे धीरे वापस दर्शक दीर्घा की ओर बढ़ते हुए। ऑनर करने वाले हैं, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनके साथ स्टेज शेयर करूंगा अभी। We all lovingly call him Anna, which means elder brother in Telugu and Tamil, of course. Over 100 films, over 30 years of great performances where he has inspired the young generation about fitness and mental health. Please give it up for our beloved Anna, Sunil Shetty. सुनील शेट्टी ब्लैक सूट में और वाइट शूज पहने हुए मंच का पहले उन्होंने पैर छुए, वहां पे प्रणाम किया और अब अनुराग सिंह ठाकुर से, मुख्यमंत्री से हाथ मिलाते हुए और इस वक्त उन्हें अंग वस्त्र पहनाया और हाथ मिलाते हुए और ये दिया गया उन्हें एनएफडीसी का स्मृति चिन्ह। मुस्कुराते हुए कुछ जैसे कह रहे हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सुनील सर, आपसे भी मेरा एक सवाल है, ये डी एजिंग का क्या फॉर्मूला है सर? आप जितने भी लोग इस समय हैं ऑडियंस में, मुझे बताएं अगर इनकी अगर लगता है कि ये बूढ़े हो रहे हैं, आप छोटे ही होते जा रहे हैं सर, ये क्या हो रहा है सर? आई थिंक खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरों की खुशी में मेरी खुशी है। वाह। मैं चाहता हूं कि सब अच्छा बने, सब अच्छा करे एंड एज एन इंडस्ट्री हम ग्रो करें एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ट्रेनिंग, जैसे अजय हमेशा कहता है कि सिर्फ 2 जन हैं जो इंडस्ट्री में जल्दी उठते हैं, एक दूध वाला है और दूसरा सुनील शेट्टी। तो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। क्या बात है। थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। मुस्कुराते हुए उन्होंने ये कहा कि दूसरों की खुशी में मेरी खुशी, ये जो गुर है यही आपको खुश रखता है और आप उससे कम उम्र के दिखते हैं। And next up, we would like to honor the man जिनकी वजह से हीरो की एंट्री सिनेमा में और भी इंटरेस्टिंग बन गई। आता माझी सटकले,
समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं। ऑलरेडी तालियां बज चुकी हैं, क्या ही देता हूं, जोर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए जिसमें है दम। सचिन, वो है ज्यादातर हमारे जो कलाकार मंच पे जा रहे हैं ब्लैक सूट पहने में, कोई खास वजह हो सकती है क्या? Yes, I think that's the preferable color and mode of dress for men there. So उनको कलर वगैरह चूज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्या बात सूट कही पहन लो ब्लैक कलर का, सब ठीक हो जाता है ना? So as we speak, our shawl has been presented to Ajay Devgan. As we mentioned earlier, he shot a bunch of films in Goa, and a memorabilia is being presented to him by Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa. और दृश्यम 2 भी यही शूट की गई थी और ये फिल्म आज दिखाई भी, मतलब यहाँ दिखाई भी जाएगी इन दिनों। Yes, there's going to be a special gala screening of this movie tomorrow. First of all, congratulations on huge numbers of Drishyam 2. बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। Thank you so much. And sir, सर बहुत कम लोग हैं जो एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन और प्रोड्यूस भी कर पाते हैं। अगर आप तीनों में से सबसे ज्यादा पसंदीदा आपको क्या है, डायरेक्शन, प्रोडक्शन या एक्टिंग? I think ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। जब एक आर्ट लवर होता है वो किसी एक चीज पे पिन पॉइंट नहीं कर सकता। फिल्म्स इन टोटलिटी आई वुड से, हर डिपार्टमेंट, क्योंकि हर डिपार्टमेंट उतना ही ज़रूरी होता है फिल्म मेकिंग में, और किसी एक डिपार्टमेंट के बिना फिल्म अच्छी बन नहीं सकती। सो बेसिकली आई लव मेकिंग फिल्म्स, एंड दैट कुड बी एक्टिंग, दैट कुड बी डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग, एवरीथिंग। So there's so many people in this audience जो filmmakers बनना चाहेंगे, actors बनना चाहेंगे. A quick, word of advice for them. I don't think anybody can give any advice to anybody. Follow yourself, and I think believe in yourself. That's the most important thing. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, please give it up for Ajay Devgan, sir. बिलीव इन योर सेल्फ उन्होंने कहा सचिन। और ऑफ कोर्स आर्ट लवर किसी एक चीज पर पिन पॉइंट नहीं कर सकता है। आप भी मानते हैं ऐसा? Yes, we'll come back to that. Meanwhile, let's see who is going to come on stage next. अब मंच पे बुलाने वाला हूं, वो एक्टर ऐसे हैं कि खुद ही जॉनर बन जाते हैं। The man who has immortalized a million characters on screen, कॉमेडी हो या नेगेटिव रोल या फिर लवेबल बाबू भैया, तेजा बन के इन्होंने इंडस्ट्री पे एक मार्क छोड़ा है। माय बिलवड एक्टर, प्रोड्यूसर एंड इंडियाज मोस्ट लेजेंडरी पद्मश्री परेश रावल सर। व्हाइट पजामा एंड ब्लू कुर्ता, सचिन देखा आपने? Yes, for a change, he's not wearing a black color suit, but he's looking very, very elegant, and he's grown a beard as well. In all likelihood, maybe he's shooting a film where he needs to grow that beard, as he's being felicitated by P.S. Sridharan, the Honorable Governor of Goa, with a shawl, and a memento is being presented to him by Dr. L. Murugan, the Minister of State for Information and Broadcasting. He's got a big smile on his face. Paresh Rawal. ज़माना है कि सब लोग कॉमेडी भी करते हैं, नेगेटिव रोल भी करते हैं, सब करते हैं, ये आज का जमाना है। लेकिन आपने उस जमाने में ये सब कुछ कर दिया था सर। आई रियली वांट टू नो कि ये जो पैराडाइम शिफ्ट आपने दिया है सिनेमा को, आपकी अब तक की जर्नी का क्रक्स क्या है? देयर सो मेनी पीपल हु आर बडिंग एक्टर्स, जो यहां पर इस समय होंगे, आपसे जानना चाहेंगे सर। मुझे फॉर्चुनेटली अच्छे राइटर मिले, अच्छे डायरेक्टर मिले, अच्छे को आर्टिस्ट मिले तो मैं कर सका, वरना कुछ रोल तो हमारे नसीब में ऐसे आते थे, अब क्या बताएं। सिर्फ पैसे नहीं होते तो हम कुछ नहीं करते, ये था। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। बड़ी ही सहजता से उन्होंने ये बात कह दी सचिन कि पैसे अगर नहीं होते तो क्या करते, लेकिन होता है ऐसा। थैंक यू सो मच सर। दर्शक दीर्घा की तरफ बढ़ते सीढ़ियों से। श्री श्रीपद नायक, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गोवा, फॉर द नेक्स्ट फेलिसिटेशन। सर प्लीज कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज प्लीज। और कुछ लोग अपनी कलम से शब्द लिखते हैं और कुछ आइकॉनिक राइटर्स ऐसे होते हैं जिनकी कलम से इतिहास लिखा जाता है। द मैन हु हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल, whose instrumental writing gave us hits from 1988, including the ones that became cult movies, namely Magadhira, Bahubali and RRR.
Give it up for the wizard of words, V. Vijendra Prasad, sir. V. Vijendra Prasad, who has written films like RRR, he is making his way to the stage. He's also looking very, very elegant, wearing a white shirt, black trousers, very, very simply dressed. Unlike his films, which have all the grandeur in it. As he shakes hands with the dignitaries on stage, he will also be conducting a masterclass at IFFI this year on writing. P.S. Sridharan, the Honorable Governor of Goa, presenting a shawl to him, and a memento is being presented as well by Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa. And joining hands are Shri Shripad Naik, the Member of Parliament from Goa. And now let's see what question does. मैं भी जो कुछ बोल रहा हूँ ये किसी ने लिखा है सर, अदरवाइज हम कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं जो कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पर वो किसी ने लिखा है, वो एक राइटर ने लिखा है। हम सबका अस्तित्व ऐसे जिंदा रहता है कि आप जैसे राइटर इस देश में हैं। तो सर, I'm a little hard in hearing. Sir, whatever I'm speaking right now has been written by a writer. Yeah. So we all exist because a writer writes something as spectacular as you do. Abhi Paresh Rawal sir, we was talking about this, that I got a chance to work with brilliant writers. So sir, all the upcoming writers, the budding writers who are there in the audience, what do you want to give them, a quick advice, sir? Be inspired by Gandhiji. Can you understand? No, I mean, this Gandhiji. Be inspired. उन्होंने मंच पे एक नोट दिखाया सचिन जिसपे गांधी जी की तस्वीर थी और कहा कि भाई ये गांधी जी से इंस्पायर्ड हूं मैं। उनकी सादगी को देखकर यकीन ही नहीं होता है कि इस तरह की फिल्म में इतनी पावर पैक्ड सिनेमा इन्होंने लिखा है। And as we speak, the dignitaries are making their way back to the audience after felicitating a handful of artists from the film industry, including Ajay Devgan, Paresh Rawal, and many others. जैसे हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से विष्णु भगवान के सबसे फेवरेट, उनका जो सबसे फेवरेट महीना था वो कार्तिक था, वैसे ही आजकल बॉक्स ऑफिस पे प्रॉफिट के हिसाब से हर प्रोड्यूसर का सबसे फेवरेट एक्टर ऑफ कोर्स कार्तिक, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए तो मैं भी इंडिया के फेवरेट एक्टर से बात करना चाहता हूं। तालियों के साथ स्वागत करो प्लीज गोवा। यू रेडी फॉर कार्तिक आर्यन ऑन द स्टेज? तो कार्तिक, बड़ी स्क्रीन पर, बड़े बड़े स्टेज पर बहुत बड़ी बातें हुई हैं, बट इफी आई थिंक इज डेफिनेटली समथिंग वेरी डिफरेंट। एक बार लोग देखो कितने हैं, ऊपर से हम गोवा में हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इफी? बहुत सारे लोग हैं यार, पूरा भरा हुआ है, बट मैं यहाँ आके बहुत एक्साइटेड हूँ और इफी में आके उसका हिस्सा बनके ऑल द मोर एक्साइटमेंट बढ़ गया है। यहाँ पे मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ आज एंड मतलब मैंने इतनी ऑडियंस अभी काफ़ी टाइम से नहीं देखी एक साथ। सो आई एम सो हैप्पी कि इफ़ी के लिए सब लोग आप यहाँ पर आए और मेरा बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है, हॉलीडे डेस्टिनेशन है गोवा, तो यहाँ आके मैं ऑल द मोर खुश हूँ। क्या बात है। सो यार, इट्स बीन अ डेकेड फॉर यू इन द इंडस्ट्री, और ये जो जर्नी रही है डेफिनेटली बहुत ही फ्रूटफुल रही है। आई डन 2 फिल्म्स विद यू, सो आई नो किस तरीके की पर्सनल एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट है तुम्हारी। सो आई रियली वांट टू नो कि ये जो इतने सालों की मेहनत है उसको आप कैसे समराइज करते हो? आई मीन स्ट्रगल चलता रहेगा, यही समरी है पूरे। बट दिस ईयर मुझे लगता नहीं है कि भूल भुलैया 2 के अलावा दिस हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ द ईयर। तो जो स्ट्रगल आपने बोला है वो हम्बल तरीके से बोला है, बहुत अच्छी बात है। बट आई रियली वांट टू नो दैट द प्रोसेस एंड किस तरीके से एंजॉय कर रहे हो इस मोमेंट को? मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ। आई मीन मैं हर मोमेंट को जीना चाहता हूँ और एक भी चीज छोड़ना नहीं चाहता हूँ। जो अच्छी फिल्में मिल रही हैं उनको पकड़ रहा हूँ, अच्छे डायरेक्टर्स से बातें कर रहा हूँ, अच्छे प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ और अपनी
मतलब अपने ऊपर मेहनत करता जा रहा हूँ. तो विथ ईच एंड एवरी फिल्म आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ एंड आई वांट टू बी रियली हैप्पी. आई थिंक एक बैलेंस है जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लाना चाहता हूँ, तो वो भी एक ढूंढ रहा हूँ. एंड कार्तिक, जितने लोग इस समय ऑडियंस में हैं, एंड ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग बोथ ऑफ अस हु आर आल्सो एक्टर्स, आई मीन यू नो, सब यहाँ सिनेमा के लिए हैं. सो व्हाट डज सिनेमा मीन टू यू? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. क्या बात है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. तो देखो ऐसा है, एंटरटेनमेंट करना कार्तिक आर्यन को भली भांति आता है. ऑन दैट नोट आई एम लीविंग द स्टेज फॉर यू. कुछ चंद मिनट स्टेज पर मैं कह रहा हूं कार्तिक आर्यन आपके हवाले करके जा रहा हूं. आर यू गाइस रेडी? ओके ब्रदर, सी यू इन अ बिट. मुझे भी एक्चुअली बहुत लोगों से बात करनी है यहाँ पे स्टेज पर. गिव इट अप फॉर अपार शक्ति, एक बार जोरदार. रुका वो सुनने के लिए तालियां. अजय सर, दृश्यम 2 के लिए थोड़ी तालियां हो जाए. सुनील सर, परेश जी, मनोज सर, सब लोग. मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे इफी में आके हम सब यहाँ पे एक खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं. और मैं बस वेलकम करना चाहूंगा कुछ लोगों को स्टेज पर. सबसे पहले one of the most dynamic leaders of our times, the fiery, the go-getter. Give it up for our Honorable Union Minister, Ministry for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Singh Thakur. Karthik Aryan there, inviting the Honorable Union Minister for Information and Broadcasting, Youth and Sports Affairs, Shri Anurag Singh Thakur on stage. Thank you sir for joining me on stage. मैं सबसे पहले, हाँ माइक ले लीजिए सर. सर मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा आपसे, और मतलब स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही है. तो मैं बस पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के मामले में ये इंडिया के लिए फिनोमिनल साल रहा है. आप इन अचीवमेंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो सब खिलाड़ियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, क्योंकि कोविड का समय देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा समय था. सरकार के लिए भी किसी खिलाड़ी को ट्रेनिंग सेशन में डालना देश और विदेश में अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी. और मीराबाई चानू के साथ तो ऐसा हुआ कि उसकी इंजरी हो गई और यूएस वीज़ा 24 घंटे से कम समय में लगाकर टिकट बुक करके अमेरिका भेजना अपने आप में चुनौती थी. लेकिन 6 महीने बाद जब वो सीधी टोक्यो गई तो भारत के लिए मेडल भी जीत कर लाई. चुनौतियां थी लेकिन अवसर भी देखने को मिले. थॉमस कप में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम में 66 मेडल जीते. ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है. लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी पिछले कल मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर थे और बात करते करते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट की बात तो आती आती है, उन्होंने मुझे पूछा वर्ल्ड कप का मैच देखा आपने जो विराट ने क्या बैटिंग की, कैसे इंडिया जीता? मैं तो इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, मैं देख नहीं पाया. उन्होंने कहा मैंने तो कहते RRR भी देखी है, क्या फिल्म बनी है. और ये कौन कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि RRR मूवी देखने के लिए. सो अब कुछ रीजनल नहीं है, देयर इज नथिंग रीजनल. इफ योर कंटेंट इज गुड, दैट इज बीइंग एप्रिशिएटेड ग्लोबली. सो फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल इट गोज. सो आई थिंक इन बोथ एरियाज ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, sports and cinema, India has done a fantastic job, and I think the Prime Minister Modi has always been there for our sports lovers, motivating them before any tournament. Olympics में जाने से पहले भी और आने के बाद भी शायद किसी दुनिया के देश के प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बात की होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की. अनुराग सर, आप तो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स को भी संभालते हैं, करेक्ट? तो इंडिया में तो क्रिकेट को रिलीजन की तरह माना जाता है. तो आप ये बताइए, जब मैच पे लास्ट बॉल पे टीम हारता है तो आप भी आम लोगों की तरह बोलते हैं कि अरे यार स्क्वायर कट मार लिया होता, स्ट्रेट क्यों मारना है? ऐसा होता है क्या आपके साथ? देखिए, भारत की एक बड़ी खासियत है, क्रिकेट पॉपुलर भी इसलिए है कि पान वाले से लेकर चाय वाले तक वही बता देगा तेंदुलकर को या विराट कोहली को कौन सा शॉट कब खेलना चाहिए था.
और मुझ जैसे लोग जो जीवन में कुछ खेले, मेरे जैसे लोग कभी सलाह नहीं देंगे, क्योंकि पता है बाहर से बोलना बड़ा आसान है, लेकिन वो बीच ग्राउंड में खड़े होकर जब 60,000 लोग बोल रहे होते हैं तो प्रेशर कितना होता है, ये उतना आसान नहीं है। अगर आप इस भीड़ में से 2 लोगों को मंच पे बुलाओगे और ये मेरा माइक उनके हाथ में देखोगे तो समझ जाएंगे मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सुपर्ब सर। सर इमोशन की बात की अभी आपने, और सिनेमा इज ऑल अबाउट इमोशंस। इसलिए मैं आपको कुछ इमोशंस दूंगा और आपको बताना होगा कि आपके इस इमोशन के बारे में सुनकर आपके माइंड में कौन सी मूवी आती है। रेडी हैं आप सर? मैं कोई बहुत ज्यादा मूवीज देखता नहीं, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। सर प्यार, अगर मेरे समय की बात करें, सर कोई भी समय का बता सकते। प्यार हर समय में एक जैसा ही होता है। सर मैं गलत इंसान हूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा फिल्म का मतलब एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, अब आप सीधा इमोशन पे आ गए। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया आपके सवाल पूछ के, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता नहीं, लेकिन मेरे समय में क़यामत से क़यामत तक मैंने प्यार किया 2 ऐसी मूवीज़ थी जो उस समय की सुपरहिट मूवीज़ थी। सर दूसरा इमोशन देता हूं, गुस्सा। सनी देओल याद आते हैं। सनी देओल, बस कोई मूवी नहीं, सीधा सनी देओल। डायलॉग मुझे बोलने नहीं आते कि 2.5 किलो का हाथ और वो सब करना, लेकिन सनी देओल याद आते हैं। ठीक है सर। कॉमेडी, परेश भाई केम छो? मजा में मजा में। सर ट्रेजेडी। अब क्यों सबकी बात मेरे साथ कर रहे हो? ट्रेजेडी को लेके देखिए, एक और आपको उरी में दिखेगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चुनौती खड़ी हुई थी, लेकिन एक संदेश ये भी गया कि भारत बदल चुका है। अब केवल देखते नहीं, 26/11 की तरह घर में घुसकर मारने का काम भी करते हैं। क्या बात है सर। सर हॉरर। हॉरर कईयों को अपनी बीवी याद आई होगी, कईयों को कोई और जमाना याद आया होगा, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा, वो समय किसी को जो हॉरर वाला, जैसे डरावना, कोविड का समय बहुत डर वाला था, क्योंकि कोविड के समय में महामारी ऐसी थी कि दुनिया के किसी व्यक्ति को पता नहीं था इसका इलाज क्या है। लेकिन हम तो सौभाग्यशाली निकले कि मोदी जी थे, तो कहते ना मोदी है तो मुमकिन है, तो 1 नहीं 2 वैक्सीन भी बन गई और सबको मुफ्त में लग भी गई। और आज मैं तो पिछले साल भी प्रमोद जी यहां पर था, ये आधा पिछली बार भरा हुआ नहीं था, अब पूरा भरा हुआ और लोग खड़े भी हैं। तो गोवा वालों को बहुत बहुत बधाई शानदार कार्यक्रम के लिए। वो समय डरावना था, हॉरर वाला था, जब पैंडेमिक का डर सताता था, लेकिन नेतृत्व अच्छा था, तो आज खुशियों भरा समय भी आ गया है। यही अंतर है। क्या बात है सर। सर मैंने सुना था कि आप एकदम क्विकली जवाब देते हैं, आज देख भी लिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। श्री अनुराग सिंह ठाकुर अभी कार्तिक आर्यन के पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। संचालन समिति के आधिकारिक सदस्य भी हैं और श्री ठाकुर की खेलों के प्रति बहुत उत्साह और प्रेम है और इन्होंने कुशल खेल प्रशासक के रूप में खेलों में अत्यधिक योगदान दिया है। उन्होंने सिखाया है दुआ में याद रखना। अजय सर, मैं आपको दुआ में भी याद रखता हूं और गोवा में भी, तो प्लीज स्टेज पर आ जाइए सर। Karthik Aryan जोरदार तालियां हो जाए inviting Ajay Devgan on stage. Well, are they going to have another banter or are they going to talk something serious? We'll find out in a moment. अजय सर, 2 अक्टूबर को विजय जी, सर मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 2 अक्टूबर को विजय और रूबाबा पणजी गए थे सत्संग में, वहां पाव भाजी खाई थी। फिर 3 अक्टूबर को वापस विजय और रूबाबा इफी आए थे, ये याद रखना। सर आप गुस्से वाली कोई मूवी बताने वाले हैं क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अजय सर, आप देवगन नहीं टॉप गन हो सर। एक ही बात बोलना चाहता हूं, आमी जे तुम्हार छिन 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 छू शुदू जे तुम्हार, लव यू सर, लव यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अब देखिए, मुझे फिल्मों से इश्क मोहब्बत और प्यार तब हुआ जब आप फूल और कांटे में 2 बाइक्स पर एंट्री मार के आए थे। इसलिए इफी के स्टेज पे मैं आपके साथ शपथ लेना चाहता हूं। सर, आप रेडी हैं शपथ के लिए? डिपेंड करता है शपथ का। नॉर्मल है सर, सामने लगी है। पिछली बार नहीं, बहुत साल पहले एक शपथ ली थी। वो वाली शपथ नहीं है सर। सर, सिंगम स्टाइल में हाथ आगे कीजिए सर। ये शपथ की गारंटी नहीं है, हाथ ही आगे किया है। सर मतलब ठीक है, इतनी गारंटी नहीं लेनी, बट हम शपथ प्लेज ऐसी चीजें कर रहे हैं, नॉर्मल सी है, ज्यादा इसमें कुछ। ठीक है, चलो। ट्रांजैक्शन आरटीजीएस नहीं होगा हमारा। हम कसम खाते हैं कि मरते दम तक फिल्मों के लिए जिएंगे। रिपीट करना है सर। मुझे रिपीट करना है? मुझे बोला गया आपसे रिपीट कराने। इसमें कसम खाने की कोई बात नहीं है, नजर आता है। आई थिंक हम फिल्मों के लिए ही जीते हैं और हम काम के लिए ही जीते हैं, अप्रिसिएशन के लिए जीते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करने के लिए जीते हैं और बाकी जो भी रिजल्ट हो, अच्छा बुरा, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस काम करते रहो। सुपर्ब है सर। सर, एक और है, हम रोज सेट पर भी जाएंगे। छोटी छोटी चीजें हैं सर, हर फ्राइडे नई कहानियां लेकर आएंगे। हम गोलमाल करके दुनिया को हंसाएंगे, भूल भुलैया करके थोड़ा डराएंगे। हम कसम खाते हैं टिकट के, पॉपकॉर्न के और समोसे के पूरे पैसे वसूल कराएंगे। हर फिल्म के साथ ऑडियंस को नया हेयर स्टाइल, नया डांस स्टेप भी सिखाएंगे और पणजी पे 2 अक्टूबर को पाव भाजी खाने जरूर आएंगे सर। हम शपथ खाते हैं, बस हो गया। जी सर। मैं फिल्मों में भी अपने डायलॉग कम कर देता हूं। बट थैंक यू सो मच सर, यू बीन एंटरटेनिंग अस अ लॉट एंड इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी हिट की जरूरत थी, जो अगेन दृश्यम 2 सर की फिल्म ने अभी अभी करा है। सो प्लीज प्लीज बहुत सारी तालियों के साथ इनके लिए। अभिषेक भी हैं, कुमार जी भी यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे दृश्यम के बारे में? नहीं, आई थिंक फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो अब फिल्म जब रिलीज हो जाती है तो उसके बाद हम बोलने लायक नहीं रहते, ऑडियंस बोलने लायक होती है। या तो जूते ऑडियंस ने जवाब दे दिया है, लेकिन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। That was Kartik Aaryan there having a chat with Ajay Devgan on stage as Ajay Devgan walks back and takes his seat. And now Apar Shakti is back. Thank you so much. Thank you. And now Kartik is going to relinquish his charge as the host, and Apar Shakti Khurana is going to be back in action. Let's see what we have next. The IFFI Satyajit Ray Lifetime Achievement Award honors the recipient's outstanding contribution to the growth and development of world cinema. And this year it is being awarded to a very, very special personality. Reality and fantasy, dreams and memories flow freely into one another in the haunting layered works of this genius. He is arguably the most important Spanish filmmaker to emerge ever. And today, he receives the IFFI Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Let's have a thunderous applause for Sir Carlos Saura. Let's play the AV. Carlos Saura, the well-known Spanish filmmaker, is going to be presented with the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award at the International Film Festival of India this year. Colócalos todos ahí. No, estás muy guapa. Anda, Ani. ¿Qué pasa? Natalia, una sorpresa. Silencio. ¿Qué será? Luz. Música. ¿Bailas? Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. Porque Voy a poner la canción. Si me das a elegir entre tú y la
riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí por los siglos. Nada, que te sembra que està bé. Negra, pelo negro, oh morena que ya morena. Wow. That was an audio video being played of Carlos Saura, the legendary Spanish director who will be honored with the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Anurag Singh Thakur and the Honorable Chief Minister Goa, Dr. Pramod Sawant, to do the honors. And please come on the stage, sir, with our IFI Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Ladies and gentlemen, I would now like to request Carlos sir's daughter, Anna Swara Rahman, to please come on the stage and accept the award on his behalf. Carlos Saura's daughter is here to receive the award on his behalf. Saura is going to turn 91 in January. So as a result, with his age and other factors, he could not make it, but his daughter is present here to receive the award on his behalf. 1955 में अपने करियर की शुरुआत डॉक्यूमेंट्री शॉट से की थी उन्होंने। उनकी पहली फिल्म द स्ट्रीट बॉयज 1960 का प्रीमियर कान्स में हुआ। उनकी पुत्री सम्मान ग्रहण करते हुए Congratulations to you and your father, and of course we have an acceptance speech via AV from sir. If we can have a look. कार्लोस सौरा का ऑडियो विजुअल यहाँ सभागार में। Siento no estar, pero mi hija me representa, mi hija Ana. Y bueno, pues estoy Carlos Saura there speaking in Spanish. His acceptance speech, he says that he's recovering from bronchitis and he would have liked to be here, but he has not yet fully recovered, and as a result he cannot travel here to Goa. But he says many thank you to the International Film Festival of India for honoring him with the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Thank you so much, ma'am. Anurag sir, please stay on the stage, sir. Thank you so much, Pramod sir. Thank you so much. Congratulations one more time. And IFI has become a platform which covers and appreciates a wide spectrum of national and international cinema, just like Jio's widest and best mix of 5G spectrum. And it gives me immense pleasure to announce the next honor, जो एक हस्ती को सम्मानित करने के लिए है, जिन्होंने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के जरिए इंडियन सिनेमा को एक नया आकार दिया है. This is the award for the Indian Film Personality of the Year. And can we please have the envelope? Anurag sir is going to announce.
Every year, there is also an Indian Film Personality of the Year that is announced at IFFI, and an envelope is being presented to the Honorable Union Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur, who will announce the name of the Indian Film Personality of the Year. Any wild guess? And the award goes to Mr. Chiranjeevi. Whoa! Give it up for Chiranjeevi, sir. Let's, what an amazing journey. And let's play the AV and listen to what he has to say. He's always an inspiration and a guiding force. He is an all-rounder in the mainstream cinema. ఒక్కొక్కటి సాధిస్తూ హిమాలయాల్ని తలదన్నే ఆయన వ్యక్తిత్వం ఎంత ఎదిగినా ఒదిగుండే ఆయన శక్తి. తెలుగు సినిమా మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ నేమ్ పద్మభూషణ్ మెగాస్టార్ డాక్టర్ చిరంజీవి. పొగరు నా ఒంట్లో ఉంటది, హీరోయిజం నా ఇంట్లో ఉంటది. సింహాసనం మీద కూర్చునే అర్హత అక్కడ ఆ ఇంద్రుడిది, ఇక్కడ ఈ ఇంద్రసేనుడిది. Wow. Lajawab, bemisal, adbhut, magical, mesmerizing. All these words got a new meaning after he started adorning the screen, isn't it? With an illustrious career spanning almost 4 decades, he has been a part of more than 150 feature films. He has been honored with most coveted Padma Bhushan and the Raghupati Venkaya Award, the highest award of Andhra Pradesh, the Nandi Award, amongst many, many others. He captured the imagination of the masses with his performance in Intilo Ramayya Vidilo Krishnaya in 1982. He is admired for his zestful dance performances and fight sequences brimming with power. His influence has claimed him the title of a mega star. He is none other than and one and only Chiranjeevi. Ek baar zordar taaliyan ho jaye. Huge round of applause for Chiranjeevi sir. He's truly India's biggest treasure. Thank you, Shri Anurag sir, for doing the honors, and Murugan sir, thank you so much. Anurag sir, can we please have you on the stage to address the entire audience? Aparshakti Khurana there, inviting the Honorable Union Minister for Information and Broadcasting. Is being called upon on stage to give his address at the 53rd International Film Festival of India. Honorable Governor of Goa, Honorable Chief Minister, Honorable Union Ministers, Secretary INB, members of the Steering Committee, distinguished members of juries, His Excellency Ambassador of France and Ambassador of Spain, international delegates, friends from the world of world cinema and media. It's my privilege and honor to officially welcome you to the 53rd International Film Festival of India in Goa. The International Film Festival of India presents unique opportunities and incredible possibilities for young and established filmmakers to network, pitch, collaborate, and experience the best from the world of cinema. Cinema captures and chisels the conflux of a country's rich culture, legacy, heritage, hopes and dreams, aspirations, ambitions, and most importantly, the collective conscience of its people at a given time in history. The concept and theme of IFFI is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, a phrase which embodies the essence, peaceful coexistence where the world is one family. In fact, India's rising global role and the presidency of the G20, जी हाँ, इस साल G20 की प्रेसिडेंसी किसी और को नहीं, भारत को ये सम्मान मिला है, revolves around this theme of the one earth, one family, one future under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The 53rd IFFI is all set to be a melting pot of
mirrored vibrant cultures and spectacle of cinematic excellence. A whopping 282 films from 72 countries will be screened this year at the 53rd IFFI. 25 features as well as 20 non-feature films will be showcased at the Indian Panorama section from a broad spectrum of entries. This edition of IFFI has arrived on the shores of Goa, bringing with it the best of international cinema, along with a special section such as the Cinema of the World, International Competition, UNESCO Film Section, sections of retrospectives, homages, tributes, and children's films, amongst others. Similar to last year, where we initiated many firsts, we are continuing in that spirit with some more firsts that this film festival will witness. For the first time, IFFI will host gala premieres of Indian films, foreign films, and original series from OTT platforms with the featured stars who have especially come to support their films. In fact, the first episode of the 4th season of one of the most awaited drama series will also be premiering here at the 53rd IFFI. I will leave you guessing by only sharing that they are one of the Israel's biggest stars. और ये इज़राइल के बड़े सितारे जो OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत पॉपुलर सीरीज इनकी आई है, उसका अगले सीजन का प्रीमियर भी कहीं और नहीं, उनकी स्टार कास्ट के साथ गोवा में ही होने वाला है. It has been our vision that we embrace new age platforms such as OTTs and make them an inclusive part of the festival. Earlier this year, we celebrated the 75 long years of diplomatic relations with France, marked by a bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and President Emmanuel Macron. And in another first, this was followed by India being the country of honor at the Marshidu Films at the 75th Cannes Film Festival. जी हाँ, 75वां वर्ष कांस फिल्म फेस्टिवल का भी था, 75वां वर्ष भारत और फ्रांस के डिप्लोमेटिक रिश्तों का भी था, 75वां वर्ष भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी था, और दुनिया को पहला सम्मान किसी देश को मिला तो हमारे भारत को कांस फिल्म फेस्टिवल में मिला. And continuing in this spirit, I am delighted to welcome France as the country of focus at the 53rd edition of IFFI. The French Republic is known for its rich and innovative film tradition and history. I extend my greetings to the French ambassador, Mr. Emmanuel, and filmmakers as part of the delegations to India. Further, for the first time, IFFI has augmented the scope of Film Bazaar by introducing country pavilions. I request all of you to please visit the new Film Bazaar. You can look at various film festivals across the world. Our Film Bazaar is as good as or maybe better than those marketplaces in any of the film festivals across the globe. In fact, they will also include state governments, industry players, ministers, apart from nations of the world. I invite you to explore over 40 pavilions, and that will be showcased at the 15th edition of Film Bazaar. Further, I am delighted to share with you all that this year again, we have given wings to new ideas and innovation. For the first time, IFFI will have a technology hub to showcase the latest innovations for the cinema world. Next up is something very close to my heart and was born last year from the Honorable Prime Minister's vision to give the youth a platform to showcase their talent. And upholding the spirit of our youthful and dynamic country, in its second edition, out of nearly 1,000 entries across 10 categories, such as direction, editing, playback singing, script writing, animation, acting, amongst others, 75 creative minds of tomorrow have been selected after a rigorous process by eminent jury comprising of lifetime awardees, NFA, Grammy and Oscar winners, and the selected 75 young filmmakers, or the selected 75 filmmakers are seated among us today. Please put your hand together
To welcome them, I welcome you all to IFFI to explore, experience and engage with the brightest minds in the industry. They represent 19 states. So these 75 representatives come from 19 states, coming from places like Jaintia Hills from Meghalaya, Lakhimpur from Assam, Khodda from Odisha, and so on. And the youngest among them is 18 years old. Yes, 18 years old. And my best wishes for your 53-hour challenge, and may the best film win. Moving on, I take great pride in highlighting that in this edition of IFFI, we will commemorate 50 years of Manipuri cinema by showcasing a specially curated package of notable feature and non-feature Manipuri films. The first Manipuri film was Matamgi Manipuri, and the film won the President Medal, Rashtriya Chalchitra Purushkar, at the 20th National Film Awards held in 1973. In another first, to make the festival more inclusive and accessible for everyone, we have made special provisions for specially abled. जी हाँ, दिव्यांगजन के लिए special प्रावधान भी किए गए हैं, keeping in mind their accessibility needs. The films in this section will be audio-visual equipped with audio descriptions and subtitles. In line with our government's inclusive vision under the Honorable Prime Minister, I am also happy to share that the Film and Television Institute of India, popularly known as FTII, will be taking 2 special courses for specially abled. One basic course on smartphone filmmaking curated by artistic individuals, and a basic course in screening acting curated by wheelchair users. Moving on, I would like to take this opportunity to congratulate the winner of the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for 2022, Mr. Carlos Sora from Spain, and I'm thankful that his daughter is here among us today. He's a great filmmaker, 93-year-old, but still, despite everything, his family has come all the way. We welcome them in Goa and thank you for making it. He is a master who has devoted his life to the art of filmmaking and distinguished himself as one of the greatest in the field of filmmaking, photography and writing. I would also like to acknowledge Spanish delegation present here today and led by Mr. Carlos, President of the Spanish Film Commission, His Excellency, Ambassador of Spain, and for those cinema lovers who can't make it, I am delighted to share that you must log on to our new website and explore virtual IFFI to attend master classes by industry experts, view in conversation sessions with industry leaders, watch film, etc. till 13th of December. And before I end, I would like to thank Mr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa, for making arrangements here. His team has been doing a fantastic job. मैं सरकार को तो धन्यवाद देता हूं, अगर जनता ना आए तो कोई भी कार्यक्रम हो वो सफल नहीं हो सकता। आप सबने आकर इस IFFI के 53rd एडिशन को सफल बनाया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और अगर आपको लगता है कि अगले वर्ष का जो 54th IFFI होगा उसमें क्या नयापन हो, क्या और जोड़ना चाहिए, क्या कुछ आप और देखना चाहते हो जो दुनिया भर के लोग यहां पर आएं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब अपने सुझाव गोवा की सरकार को भेज सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रमोद जी जब गोवन कुजीन की बात कर रहे थे, गोवा कल्चर की बात कर रहे थे, गोवा सिनेमा की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अंदर से उनकी एक ही आवाज आ रही थी कि आइए और बार बार आइए, गोवा घूमने भी आइए, सिनेमा के लिए भी आइए, यहाँ की कला संस्कृति को देखने के भी लिए आइए। आपका नाम ही ऐसा है, गो मिस जाओ, आ मिस आजा, गो आ, तो आप जाने के साथ साथ आने का बुलावा भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक ऐसा डेस्टिनेशन बना है कि इसको कोई और रिप्लेस अब कर नहीं सकता। देश और दुनिया के फिल्म जगत में गोवा ने एक अपनी पहचान बनाई है और अगले साल हम इससे बड़ा और इवेंट लेकर गोवा में आएंगे और आशा करता हूं अगले साल आप आकर फिर
इफ़ी की शान बढ़ाएंगे। देश और दुनिया के कोने से आए हुए सभी अपने फिल्म कलाकारों का, फिल्म निर्माता निर्देशक का मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मित्रों, हमारे लिए अवसर है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते मनाते हम लोग अमृत महोत्सव से अमृत काल की ये यात्रा में अगले 25 वर्षों में भारत को दुनिया का फिल्म शूटिंग के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए और टेक्नोलॉजी हब बनाने के साथ साथ कंटेंट हब बनाने का काम करें। ये यात्रा जो हमारी अमृत काल तक की होगी, जहां हम अलग अलग क्षेत्रों में भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे। आज ये संकल्प लेते हैं कि सिनेमा जगत में भी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। इस बात का संकल्प हम इस धरती से लेकर जाएंगे। ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता, ना केवल दुनिया के सबसे बड़े फिल्म बनाने वाला देश, बल्कि दुनिया का एक केंद्र बिंदु फिल्मों को लेकर बने। चाहे वो मार्केट की बात हो, फिल्में बनाने की बात हो, ये सब संभावनाएं हैं। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, साधनों की कोई कमी नहीं है, शूटिंग की साइट्स की कोई कमी नहीं है। तो अपने ऊपर जो विश्वास होना चाहिए, हमें विश्वास जगा है मोदी जी के नेतृत्व में। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। एक बार फिर सभी कलाकारों का, सभी फिल्म जगत की हस्तियों के साथ साथ गवर्नर साहब, सीएम साहब, यूनियन मिनिस्टर्स, फिल्म कलाकारों के साथ सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। The Honorable Union Minister for Information and Broadcasting, Youth and Sports Affairs, Shri Anurag Singh Thakur, addressing the gathering here at the 53rd International Film Festival of India. For bringing the festival to life. So on the occasion of 75 years of independence, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi launched the Azadi Ka Amrit Mahotsav last year. Since then, the central government along with state governments and several governmental and non-governmental institutions have undertaken thousands of activities. In April 2022, the Honorable Minister of INB, Youth and Sports, Shri Anurag Singh Thakur, launched a series of 7 short videos to celebrate the inspirational stories and achievements of the women of today under Azadi Ki Amrit Kahaniyan, an initiative by the Ministry of Information and Broadcasting in collaboration with Netflix. The second part of Azadi Ki Amrit Kahaniyan is being launched today on this platform of IFI with short videos of 2 of the bravest leaders of the 1857 freedom struggle, Rani Lakshmi Bai and Veer Kunwar Singh. Now I request Honorable Governor Goa, Honorable Chief Minister, Honorable INB Minister to formally launch it. Sir, iPad आपके हाथ में है, please button दबाइए, please do the honors. जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। ये है उस वीरांगना की कहानी, कहते हैं जिसे झांसी की रानी। बचपन बीता संग खेल कृपाण ढाल कटारी, फिर राजा गंगाधर से ब्याह कर आई महल बन के रानी। हुआ राजा का निधन, सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी। अवसर देख ब्रिटिश राज के फौजी पहुंचे द्वार झांसी। चंद्र तिलक माथे पर, हाथों में तलवार, साथ अपनी महिला सेना के किया जोर का वार। पुत्र दामोदर को कस लिया पीठ पर, दिया परिचय साहस का, लड़ी 7 दिन होके निडर। नहीं दूंगी अपनी झांसी, लगाई जोर की ललकार, आंच ना आने दी अपनी मिट्टी पर, अंग्रेजों की कोशिश हुई नाकाम। महीनों बाद अंग्रेज लौटे, फिर से धावा बोला, ग्वालियर में थी लक्ष्मीबाई, फिर उठा युद्ध का शोला। चारों ओर से घेरा दुश्मन ने, घायल हुई रानी, वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी, वो मर्दानी। वीरता की थी वो साक्षात मूरत, थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई। याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में
जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। वाह क्या बात है, आजादी की अमृत कहानियां। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। एक समय की बात है, थे एक 80 साल के जवान, नाम था वीर कुंवर सिंह। बुलाते थे उन्हें बिहार की शान। नेतृत्व के गुणों से भरपूर थे वो, धर्म जाति से पार, सभी वर्गों को एकजुट कर लड़े वो। हैरान थी ब्रिटिश सरकार। जगदीशपुर के थे जमींदार, पर कहलाते थे शाहबाद का शेर। जब लगाया अनुचित लगान, पाला उन्होंने अंग्रेजों से बैर। शुरू किया विरोध, पहुंचे दानापुर से आरा। रिहा कर भारतीय कैदियों को ब्रिटिश राज को दिया जवाब करारा। कायम रखी स्वतंत्रता की ज्वाला, बढ़ चले आजमगढ़ की ओर, और गुरिल्ला युद्ध नीति से विजय करी जीटी रोड। श्रीपुर घाट पहुंचे, की शत्रुओं ने गोलियों की बौछार। गोली लगी हाथ पर, हुआ था जोर का वार। काट अपने हाथ को किया गंगा माँ को समर्पित, लेकिन जारी रखी जंग और किया अंग्रेजों को पराजित। लौट आए जगदीशपुर, वहीं लड़े वो और वहीं दी समाधि। देगवा बहादुर थे वो, याद रहेंगे बाबू कुंवर सिंह वीर फौलादी। 1857 की जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आजादी की अमृत कहानियां के लिए। क्या आपको पता है किसकी आवाज थी ये? Yes, absolutely. The golden voice, Padma Shri Manoj Bajpayee ji. Sir, may I please request you to please come on the stage. मैं आपको थोड़ा सा परेशान करना चाहता हूं। मनोज बाजपेयी मंच की ओर अग्रसर और उनसे कुछ प्रश्नोत्तर। देखिए, वॉइस के बारे में शायद कुछ बात की जाए। So, मनोज सर, सबसे पहले ये जो आपने नरेट किया है उसका एक्सपीरियंस कैसा था? We would all love to know. ये सबसे पहले हमारे नेटफ्लिक्स की तरफ से और सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से मुझे ऑफर दिया गया और मैंने खुशी खुशी स्वीकार भी किया, क्योंकि बहुत सारे वीरों की गाथाएं हम जानते हैं, क्योंकि हम जिस तरह के क्षेत्र से आते हैं, जिस तरह के स्कूलों में पढ़े लिखे हैं, जैसे कुंवर सिंह साहब हुए जी। बहुत सारे राज्य के लोग या बच्चे नहीं जानते होंगे, ये आजकल के बच्चे, लेकिन कुंवर सिंह जी की कहानी अपने आप में बहुत बड़ी है। और मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है मुझे कि कभी कभी कि हम लोग कभी कुंवर सिंह या ऐसे वीरों के बारे में हम लोग कभी फिल्म बना क्यों नहीं पाए या नाटक हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि एक ऐसा वीर जिसे गोली लगी अंग्रेज़ों की तो अपना हाथ काट कर भी लड़ते रहे वो। तो इस तरह की गाथाएं, इस तरह की वीरों की, वीरांगनाओं की गाथाएं हैं और इनसे जुड़कर उसको बस अपनी आवाज दे करके ही हम काफी गर्व महसूस करते हैं। क्या बात है। तो मुझे लगा कि शायद एक छोटे रूप में ही सही उससे मैं जुड़ जाऊंगा और बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत मित्रता के तरीके से जो है नेटफ्लिक्स और सूचना प्रसारण के बहुत सारे दोस्त मित्र लोग, विक्रम जी वगैरह, सबने मुझे कांटेक्ट किया, संपर्क साधा, उसमें मुझे हाँ करने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्या बात है मनोज सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनोज सर के लिए। मैं सबको मैं बताना चाहता हूं मनोज सर, एक बार दंगल के बाद मुझसे सवाल पूछा गया कि यार आपको मुश्किल नहीं आई, मतलब इतने वहां पे खतरनाक एक्टर, इतने बड़े सुपरस्टार आमिर खान के सामने इतना मतलब कॉमेडी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं उनको बोला मेरी स्कूलिंग ना मनोज सर के थ्रू हुई है, मैं उससे पहले आपके साथ काम कर चुका था, तो मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ गलत नहीं हो सकता है। तो मेरे सर पे हाथ रखने के लिए शुक्रिया। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपके साथ वक्त बिताया है तो मैं जानता हूं कि आपकी हिस्ट्री को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, माइथोलॉजी को लेकर, हर एक चीज की बहुत ज्यादा नॉलेज है आपको। तो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दीज स्टोरीज, आजकल के युवा पीढ़ी को क्या इससे
प्रेरणा मिलेगी और क्या what will the takeaway for them? The most important thing that is lacking now in our education system, that we stop talking about the people because of whom we found this freedom, because of whom the culture of this land has been glorified internationally and globally. Somewhere we always think that this is the time which is only true. You know, this is the only time which is most glorified. This nation, this land has seen many glories like this, or more than this. Okay, and we can only learn from. We can have much more. We'll feel much more proud if we know the true history or true story of all the brave people, all the glorious people of this land. Absolutely. Yeah. Please give it up for the real heroes. And thank you so much, Manoj sir. बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. बहुत अच्छा बोलते हो यार. अरे सर, आपसे सीख रहा हूँ सर. Apar Thank you so Shakti much. Give it up Khurana having a chat with Manoj Bajpayee about his new endeavor there, as Manoj Bajpayee makes his way back to the audience. To request our distinguished guests for the evening, Honorable Governor of the State Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai, to address the gathering. So I would request you to please come on the stage. The Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan, making his way to the stage to present his address at this inaugural function of the 53rd International Film Festival of India. श्रीधरन इससे पहले मिजोरम के भी राज्यपाल रह चुके हैं. Honorable Union Minister, Dynamic Sri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Minister of State for Information Dr. L. Murugan ji, Adaraniya Sripad Naik ji, Secretary Information and Broadcasting Abur Chandra ji, Chief Secretary of Goa Goel ji, other officials and veterans in the film field, members of the Entertainment Society of Goa, members of the international jury, eminent personalities from the film industry, our distinguished guests, and my dear friends. I'm extremely happy to participate in this function because regarding IFFI, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji already stated with respect to his objectives, and our Information Minister also gave the details with respect to the objective of IFFI. I would like to say that in 1952, second edition of IFFI, while it was inaugurating, Dr. Radhakrishnan, Sarvepalli Radhakrishnan, at that time declared that this is a golden opportunity for us to interact with the artists and filmmakers in the world. Then he, a philosopher seen by our country, he has stated that thirst for knowledge of India and its devotion should be always be promoted through this process. And the Vishwaguru concept stated by our Honorable Information Minister, you see, as far as India is concerned, even after our independence in 1947 onwards, what type of importance we were giving to the artists. The artists are considered even above our protocol and power politics and other things. I am remembering
one thing from history. When our Bharata Ratna awardee, that M.S. Sugalakshmi, is known to all of us. When our first Prime Minister in 1950s, there were a Carnatic music concert was there in Delhi, and they have not seriously invited the Prime Minister of that time. But when the program started, as an uninvited guest, the first person in the protocol, our Prime Minister at that time, was sitting in front of us among the audience. The organizers embarrassed, and everybody was wondered, and in an embarrassing situation at that time. Then press people and organizers and others asked the question to the first Prime Minister of India, what do you say about it? Then his answer, I would like to emphasize on that. The first Prime Minister of India, he answered, who am I? A mere Prime Minister in front of this queen of song. That is a tradition of our country, and our Prime Minister is concerned, President Narendra Modi ji is concerned. Sports sphere and art sphere, maximum importance our Honorable Prime Minister is giving. So as far as the purpose proclaimed by Radhakrishnan in his speech, he stated that two aspects. I just want to request your attention on that aspect. That two important objectives of IFI, according to the inaugurator in 1952, national integration and world solidarity. National integration plus world solidarity. These are the two important motive, objective declared by our Vice President at that time. We will all think about it. And national integration is concerned, I would like to say the most important role can be played by artists as well as literary figures. I can say one thing. In 1947, our country was divided. You just think about the artists at that time, singers at that time, poets at that time. If you take the stock of that, all the artists and singers went to Pakistan. 90% of them returned to our motherland within 2 or 3 years. This is the history, and I am not taking much of your time, but M.S. Subbulakshmi is concerned. She was a queen of Carnatic music, but at the same time, she was excellent in Shahanai. Shahanai is part of Hindustani music, but South Indian Carnatic music, as far as that field is concerned, she was expert in Shahanai. In our Muruganji's state, M.L. Vasanta Kumari, she was very expert. South Indian musician, belonged to Carnatic music, but she was an expert in Rudra Veena. So this is a tradition of our country. That is why national integration is concerned. We have a duty, and I am not finding fault with anybody, but bear it in our mind. Our country is moving fast in all fields of life. You see, our Indian people, Indian origin people, you take any country in the world now. In UK, I am remembering one aspect. Winston Churchill once
told the world that Indian people are not competent, they are not able to rule, so not to give freedom to them. But now a person who swear by touching Bhagavad Gita is the Prime Minister of UK. For the information of Goan people, I would like to say the Prime Minister of Portuguese, his origin is from Goa. You take the case of Vice President of US, and Indian origin madam is the Vice President of US. Dutch, in a certain time, my state, Kochi was ruled by them. Dutch people, in Dutch parliament, now 2 or 3 Indian origin people are there. Yesterday, 2 days back, Indonesia, Bali, 92% of the population in Indonesia belongs to a particular community and they are having only one God. Their commitment to one God. But you see, what is the name of the airline? Garuda Airline. What is the name of the bank? Kubera Bank. And what are the names of certain cities there? Bali and other things. Padaliputra and other things. I am not going to the detail. So, our information minister stated that we are fast running to Vishwaguru concept. Once upon a time, all European countries were in dark days. People are coming to our country for getting education and knowledge. So such a great country, once upon a time, about 500 years back, our country's name was Ratna Garbhayam Bharat, richest country in the world. Now, persistent effort on the part of our country to come up again to the stage, and according to me, Natya Shastra 64 items are there. If you closely analyze it, drama is there, Nadaga also drama is there, film is also interpreted as part of that 64 Natya Shastra items of our history. I am requesting all should bear in mind we can achieve our goal. The Vishwaguru concept is declared by Swami Vivekananda. Vivekananda dreams are going to be true within short time. I am requesting your cooperation. I wish this IFI 53 all the best, and artists are concerned. I am wishing all the best for you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Goa. The Honorable Governor of Goa, P.S. Sridharanji, addressing the gathering here at the 53rd International Film Festival of India as the host of our Shakti Khurana makes his way back on stage. Okay, now it is time to meet the man behind this mammoth festival. He turned days into nights and nights into days to make Asia's biggest international film festival this exciting. Please welcome on the stage the festival director, MD NFDC, Shri Ravinder Bhakar. श्री रविंदर भाकर, निदेशक महोत्सव, सीईओ केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड, एमडी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, मंच पर अपने संबोधन के लिए। Namaskar, good evening everyone. Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan, Honorable CM, Shri Pramod Sawant, Honorable Union Minister, Shri Anurag Thakur, Minister of States, Shri Murugan Saab, Shripad Nayak Ji, our Secretary, Shri Apurva Chandra, Chief Secretary Goa, all the steering committee members and the technical committee members, the distinguished jury members, and all my friends from the media, and all who have contributed in different walks of life to kickstart today's IFI proceedings. I have been given the opportunity and the responsibility to give vote of thanks on behalf of everyone and to everyone. I acknowledge
the presence and contribution of all, and I'm extremely thankful you all are here with us in such a large number. I'm extremely thankful to our two visionaries, our Honorable Union Minister, who gave us vision to scale up the festival this time, and our team has put in days and nights efforts to make it bigger and bigger. Our other two key principals, Secretary Sir and the Chief Secretary Goa, who held us together throughout this festival period. I'll not take much of time, already we are running behind the schedule. I thank you all, everyone who have come in such a large number to inspire us, to encourage us and support us. Thank you, Jai Hind. Shri Ravindra Bhakar there, the CEO of NFDC, the National Film Development Corporation of India, that is responsible for holding the International Film Festival of India, now presenting his vote of thanks, and that kind of concludes the official part of the International Film Festival of India, the inauguration ceremony. Let's see what Apar Shakti has to say. For the man who made this possible. Thank you so much, sir. Thank you. पणजी गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विश्व की जानी मानी हस्तियां अपना कला का प्रदर्शन करेंगी। 69 देशों से 280 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। विश्व फिल्म हस्तियों के साथ बातचीत के सत्र होंगे और कार्यक्रम का समापन हिंदी फिल्मों के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियों से होगा। इस वक्त भी मंच पर आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे और अब मैं अपने प्रोड्यूसर दामोदर आठलेकर के साथ साथ टेक्निकल टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ। टेक्निकल टीम में हमारा सहयोग किया प्रकाश अकोलकर, प्रमोद कुमार, पीवी रविंद्रन, राजेंद्र नायक, सुहास्यचारी, गुरुदास गावस और सुब्रतो मलिक। मैं सबका धन्यवाद करती हूं और अपने सहयोगी सचिन चट्टे के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी आकाशवाणी के स्टूडियोज आपको वापस ले चलती हूं। नमस्कार। अभी आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी गोवा से 53वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह का सजीव प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी हिंदी में और सचिन चट्टे अंग्रेजी में। यू आर लिसनिंग टू ए लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फ्रॉम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, पणजी, गोवा। Our commentator were Dr. Raj Shri Trivedi in Hindi and Sachin Chatte in English. Originated by All India Radio, Panaji, Goa, this broadcast came to you from Delhi station of All India Radio. बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चल। तोड़ खुलासा बना हुआ, माया में मन उलझे रहा न्यूं, जी में रासा बना हुआ, रहे पता गुरु तेरा बेमतलब क्यों, हंस उदासा बना हुआ, यो काया माया आनी जानी, खेल तमाशा बना हुआ। हाँ, ज्ञान में सब कुछ ठीक ठाक दिखे, ज्ञान में सब कुछ ठीक ठाक, अज्ञान ने बुद्धि चतराई, कर परिणाम गुरु गोरख को, पूरण ने झोली ठाई, पूरण ने झोली ठाई। चलते चलते सुनते हैं सतपाल को।